everyone, welcome back to Shrey FC. I hope you are well, you are good. UEFA Champions League is back. It's sad my team is not there, but you have to watch it. It's just something beautiful. And watching Napoli as a Real Madrid with two great people. That is first of all Anurag Bhai, three great people, apologies. Mohan Bhai from City Unplugged. Link is given in the title. Do go and subscribe to City Unplugged. Do go and subscribe to Anurag Bhai Sport Free. And Fateh Bhai has no YouTube channel, but in future hopefully will open it. He will be here soon. So Napoli Real Madrid is about to start. First of all, Mohan Bhai, kaise ho aap and how we are doing? Yeah, I'm good. City have begun that tradition of losing against a shit team this weekend. So I had to come to terms with it when I realized that City lost to Frank Lampard's Everton at home last year and still did what we did. So happy with that. Looking forward to today's match. What are your predictions? Shrey? I don't know. मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है. For me, I'm going with right now 3-2 Napoli, but it is tough for me to say because this is going to be a massive match. But now, coming on to the lineup of Napoli, first of all, and more by this is the lineup that Napoli are playing today. They are going with Meret, Lorenzo, Ostegano, Nathan, Oliveira, Enguzia, Lobotka, Zelinski, Politano, Osimhen, Quara. So I think overall it's not a surprise. I expected the same lineup from Napoli, and it's a very, very good lineup to be really honest. So overall, what do you think about this lineup? Like, do you think this lineup is more than good enough to get Real Madrid today? I think first thing is, I think you need more than a lineup to beat Real Madrid. You need that spirit and things like that to meet Real Madrid. All of those things come into picture. If you want to beat Real Madrid, you need to break them internally. So it's a difficult question. But I think, honestly, the defense is not good enough. The defense of Napoli is not as strong as last year. Because last year you had Mario Rui, Kim Min-jae, Fabian Ruiz, I think. So I think the defense has changed quite a bit with Kim Min-jae leaving and stuff. So I don't think the defense is still that strong for Napoli. I think defense for me is a bit of worry, but still overall the squad is really, really good, bro. Like, my main point of view, the squad is still very strong, and attackingly, this squad can still beat anyone for me, to be honest. And that brings me to Real Madrid squad now. And coming on to Real Madrid squad, this is the squad Real Madrid are going with. That is Kepa, Carvajal, Bellingham, Nacho, Junior, Cruz. The match has already started. Rodrigo, Camavinga, Valverde, Chumini, Rudiger. What do you make of this squad, Mohan Bhai? Like, is it a very, very good lineup for Real Madrid today? I mean, honestly, if you see the front three is like, I think one of the... you would also say, just looking at the front three, Vinny Jr., Rodrigo and Bellingham, one of the most exciting front threes in world football at this point of time. But still, I don't think the defense is as much strong. I think it's an experimental team at this point. Like Carlo Ancelotti is experimenting with the formations. He's seeing how can I bring in Jude Bellingham into the picture more. They're playing without a striker like a Kylian Mbappe. They wanted Mbappe. So I think it's interesting. Real Madrid, we have to remember, is going through a transition phase. So, but if you ask me my prediction, I would go for a Real Madrid win today against Napoli. Okay, that's a big prediction by Mohan Bhai as well. He's going with Real Madrid win. Yeah, fantastic, bro. Because it's very much possible. Long ball over Real Madrid, but that's been intercepted by Napoli. तो अभी से मैच आई थिंक ओवरऑल रियल विल वो लॉन्ग बॉल फाइंड करने की कोशिश करेगी बीच में रियल ये चीज बहुत ज्यादा करेगी मेरे पॉइंट से आज व्हाट्स योर टाइम स्टैम्प से भाई व्हाट्स योर टाइम स्टैम्प मेरा टाइम स्पेंड है मोहन भाई 2 minutes and 3 seconds perfect mine is 2 minutes and 2 seconds 2.5 seconds so I think it's fine but बहुत अच्छा मैच होने वाला मोहन भाई लाइक आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मैच ऑफ द वीक जिस तरह चल रहा है और ओवरऑल मोहन भाई लाइक मैं इस लाइनअप अगर देख रहा हूं एंड आई थिंक अनुराग भाई आर यू रेडी इन द बैकग्राउंड नहीं ओके रेडी नहीं है वो तो कमिंग ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है जो रियल मैड्रिड की लाइनअप है आई थिंक रूडिगर का बहुत बड़ा रोल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टू कीप ओसिमेन क्वाइट आई थिंक रूडिगर ने जिस तरह हालैंड को पिछले साल पहली लेग में क्वाइट रखा था आई थिंक रूडिगर इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स रियल मैड्रिड के पास आपके लॉन्ग पासेस आपकी स्ट्रेचिंग जो वो करते हैं पासिंग में द कैरेक्टर ही इज तो आपके रूडिगर पे क्या ख्याल है लाइक इज ही नाउ वन ऑफ द लीडर्स इन द रियल मैड्रिड मोहन भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू से Yeah, I think he's one of the defenders who defended against Haaland very well last season, especially at the Bernabeu. I think he didn't play the second leg, and many people were surprised. But against Haaland, not many defenders did well last season.
Bayern Munich defenders, no one, but I think Rudiger was one who stood up to him. I can count on my fingertips one or two defenders. So that tells you about the quality of Rudiger. He's like I mean, with Rudiger, it's interesting. He's aggressive going into those tackles and stuff, but his positional sense and intelligence is very good. He's risky, but he does it with a sense of intelligence. So I think Rudiger will be in the top five defenders in world football at this time for me. I think he's fantastic right now. And Kamavinga has been fouled, but that was a very good attack, Mohan Bhai. That was a very good attack by Napoli. Yeah. So coming on to the match right now, what do you think tactically, how is it going to pan out, Mohan Bhai? Like for me, this is going to be like Real Madrid countering and Napoli being a bit more dominant side. But what do you think? Like, do you see a bit changing Real dominating Napoli countering? Or do you see the game the way that is supposed to I, go? I personally think in these sort of games, when there are two teams which love to play on the counter, the game will generally be end to end. So, but the Hmm. important thing for Napoli is who picks up Jude Bellingham. The runs of Jude Bellingham will be very important. He disguises those runs so well, and he arrives there at the right point of time. It took Gundogan. Gundogan came to City 2015, and it took Gundogan almost till 2018, 2017 to. I mean, it took Gundogan until he was 27, 28 years of age, 29 years of age to perfect that thing of arriving in the box. It's amazing how Jude Bellingham at what Jude Bellingham is 2021 now. It's Hmm. amazing how Jude Bellingham at this age can. It's something you can't coach, arriving at the right point of time in the box. It's amazing how Jude Bellingham makes those runs at such a young age, because it comes with experience or talent. That's all. You just can't coach it. Or I think how many winners Jude Bellingham is getting right now is insane. Like how Yeah, many matches exactly. is winning. That is insane. I've never seen a player sign for Real Madrid straight away and score so many True that. important goals in the final stages. That is something Mohan Bhai have not seen. So what's your opinion on Bellingham clutch moment? Like, is he lucky or is he just a very, very big game player? I mean, I think he creates his own luck. Once luck, twice luck. But if you're doing it every time, it's. I think that his desire to get into the box at each and every time is what is making his luck. People say that, for example, for Raheem Sterling, people say he scores tap-ins. But how many people do you see be in the position which Raheem Sterling is? Near post, far post. There are not many people in world football at that time. Real Madrid are on an attack. What an attack, right? यार रॉड्रिगो को फिनिश करना चाहिए था. What a Tight angle, chance. tight angle, tight angle. पर अगर तो थोड़ा ऊपर मारता ना तो गोल हो जाता. बहुत No, अच्छी चांस थी you बट know, there are only two strikers who can. Oh, that's a good ball. I think Vinny Junior will reach it. Vinny Junior is having it. and Fateh Bhai has joined us. Thought it will be a header. Bigger Fateh Bhai, after long time no see. कैसे हो Fateh Bhai आप? बिल्कुल बढ़िया श्रेय भाई हाउ आर यू I'm very good Fateh Bhai and so good to see you bhai. So good to see you. who are you supporting tonight Napoli or Real Madrid Man, I'm neutral. I'm bit थोड़ा soft spot Napoli की तरफ. I will want Syria teams to do well. तो थोड़ा सा yeah soft spot है मेरा Syria teams की तरफ, but really excited, really excited. तो आप बताइए आप किसकी तरफ हैं आज फतेह भाई? Who are you supporting today? I think जैसे the first match went the Braga game so I am okay with a draw here I think as long as Napoli can qualify behind Real Madrid I think I'll be okay with it I actually expected कि Union Berlin will go through but now I think No, no no chance for Union Berlin. I think. sad I think Madrid will win. I think Madrid will win oh yeah today. I think so too. But I'll be okay if Real Madrid win at home against Napoli, and here Napoli can get a point Hmm. because they've been very patchy, and there's a lot of all off field drama. The whole Osimhen thing. Yeah. Hmm. So they're not all that good right now. So this is the best time to play them. और even league में भी फतेह भाई, like, even in the league Napoli I've seen it not started really well. Yeah, I think जो इन्होंने decision लिया किम को निकालने का, and the fact that they didn't find a proper replacement for him. Real. Go on. Sorry. Go on. Go on, Yeah. go So on. I think इन्होंने बहुत गलत फैसला लिया in the transfer market, because Kim was very good for them last year, so they needed a defender with experience, and they could have gotten players like Pavard or something, although they play four at the back.
So they've really missed out, and I think that defense is really suspect. Napoli, I don't think they'll be challenging for the title this year in Italy. पर आपको नहीं I लगता है think लाइक with सीरिया के लिए फतेह भाई स्टिल टू स्ट्रांग लाइक अभी भी आई थिंक इंटर इज स्टिल द मैं कहूंगा इंटर इज स्टिल द लाइक द बिगेस्ट वन उसके अलावा एसी मिलान नेपोली मुझे लगता है लाइक इट्स गोना बी वेरी वेरी टाइट अगेन क्योंकि इंटर इज द बेस्ट वन बट एसी मिलान हैज आल्सो नॉट बीन रियली इंप्रेसिव जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने करी है Yeah, they've not been impressive, but they, उनको एक knack आ गया है. The way they play with Liao, the way to win games. Okay, they lost to Inter Milan, but now they have this idea how to get on the counter, and your player Pulisic, a former Chelsea player, he's been doing pretty well. I mean, I think he scored at the weekend, and he scored I think against Roma as well. So he's doing well, and they needed a right winger. So maybe AC Milan is more balanced, and I think we are sleeping on them. That one bad result they had. So let's find out, tomorrow how they do in the Champions League. And big up to Anurag Bhai. Big welcome Anurag Bhai. कैसे हो आप? People please go and subscribe to Description Sports Freak, City Unplug, and do like and subscribe the video. And Fateh Bhai hopefully will soon open a channel. तो Fateh Bhai का भी हम channel जरूर डालेंगे. By the Because way, Fateh Bhai से सीखने you बहुत guys मिलता है. don't know. You guys don't know. Me and Fateh Bhai plan to open a channel in international relationships, novel, poetry. By the way, we are planning to open a channel. We planned it 1 month ago, basically. Russian literature, whatnot. Russian literature, French literature. French literature, absolutely. And the Fateh Bhai has a lot of knowledge on literature. Yeah, man. No, I love to read. I love to read. What are your predictions regarding to this match, Fateh Bhai? See, I think Real will win 3-1, but my heart wants a draw. 2-2 draw will be very nice. But I think Real Madrid are just too powerful for this Napoli with this defense. And और कौन सा अच्छा match है आज? I think Manu Galatasaray Manu Galatasaray is very interesting. Yes. Manu Galatasaray is very interesting for me, actually, for me and Mohan. Why for you? I predicted that Galatasaray yes. will defeat United. Yes. I remember that video. Yes. You said Manu, but they'll not progress. They will not progress. And first of all, तुमने जो बोला था ना कि Union Berlin, मैंने बोला था Union Berlin can do a little bit of magic. Yeah. But in the entire match, they're all just defending. And Union Berlin doesn't have an attacking outlet, so if you can't Attacking attack, outlet, how yeah. much will you defend? There will be no outball and you'll be get hit. But the problem with Real Madrid is, Fateh Bhaiya, the problem with Real Madrid is that Real Madrid's defensive structure is, matlab, a big, day by day, is just becoming a big trash. And any quick counter team can perish them. Any quick counter team. थोड़ा सा मुझे जितना मैंने रियल मैड्रिड को देखा है मुझे लगा थोड़ा ना इस बार एंचेलोटी थोड़ा मिडफील्ड को ज्यादा पैक कर रहा है मुझे जितना देखने से लग रहा है कि ज्यादा ही मिडफील्ड को पैक कर रहा है तो वहां से प्रॉब्लम ये हो रही है कि ज्यादा रियल मैड्रिड थोड़ा नैरो हो रही है विद ज्यादा नहीं प्रोवाइड हो रही है अब यूनियन बर्लिन का जो मैंने मैच देखा था मैं वही सोच रहा था रियल वाइड से अटैक क्यों नहीं कर रही पर मुझे लगता है विनी जूनियर के आने से थोड़ा सा मुझे लगता है अनुराग भाई इसमें इंप्रूवमेंट होगी बट आज का मैच मैं कहूंगा इस ग्रुप के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे मैड्रिड एंड अनुराग बट कमिंग आउट एक और यार यहाँ पे इस टॉपिक में बात करना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस मैच के अकॉर्डिंग इसमें पहले मैं जाऊंगा फतेह भाई के पास जाऊंगा फिर अनुराग भाई आप बताइए आपको क्या लगता है कौन ग्रुप जीतेगा फतेह भाई विल इट बी नेपोली जो ये ग्रुप जीतेगी या विल इट बी रियल मैड्रिड जो ये ग्रुप जीतेगी 100% Real Madrid. I think the kind of players they have, the experience they have, the coach, nobody compares in this group. और अनुराग भाई आपके अकॉर्डिंग आज के मैच के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा भाई इट ऑल विल डिपेंड ऑन टुडेज मैच इफ अगर नपोली क्विक काउंटर फॉर्मेशन पे आ गया क्विक काउंटर खेलना शुरू कर दिया इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर बट मुझे लगता है कि डिफेंसिव स्ट्रक्चर उन लोगों का इंप्रूव करना पड़ेगा थोड़ा सा ओशिमे है भाई एंड आई थिंक ओशिमे उनका फ्यूचर प्लेयर भी हो सकता है उनके क्लब में क्योंकि कछुआ तो नहीं जाएगा आई थिंक एम्बापे मुझे नहीं लगता यार तो आई थिंक यार आई डोंट नो मैन आई डोंट नो माय हार्ट सेज नपोली विल विन Oh, Diego Maradona. My heart is saying something else, but my mind is saying something else. So I am in a big dichotomy basically. So यार नहीं बोल सकता. And मोहन भाई आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आप कौन ग्रुप जीतेगा आपने प्रेडिक्ट तो रियल मैड्रिड करा था बहुत पहले रियल मैड्रिड मैड्रिड चेंज कर दिए
I think it's Real Madrid, because I think to defeat Real Madrid, you need to break their spirit, especially the spirit of Madrid in a Champions League matches. With City, I've seen it firsthand. So it's like you have to break their spirits, and it's a lot more than a footballing match with Real Madrid. It goes a lot more. So Madrid ही जीतेगा the group. मेरा Like ब्रेन super बोल रहा है heavy मैड्रिड का flawless strike. चांस हाई है क्योंकि फतेह भाई ने जैसे बोला कि दे हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटी एक्सपीरियंस एंड यू कांट डिनाई एंचेलोटी मैन यू कांट डिनाई हिम और फतेह भाई बहुत अच्छे से एंचेलोटी को बहुत सालों से देख रहे हैं अब हम लोग देखने से पहले भी फतेह भैया देख रहे हैं भाई आई थिंक बट मुझे लगता है यार कि आज अगर डिफेंस कचरा हुआ मैं फिर भी बोलता हूँ एंड स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट हाफ एंड अगर स्पेसेस पे थोड़ा सा अगर स्पेसेस पे थोड़ा सा यार मौका मिल जाए नापोली को तो यार आई डोंट नो मैं तो ये बोल नहीं सकता भाई Just another thing on a tactical point of view, Shrey Bhai ने बोला कि Shrey Bhai ने बोला कि width, right? I think it's echoing Shrey Bhai. तो हाँ, Shrey Bhai ने बोला था width, right? It is interesting that coaches around the world like are focusing on moving away from width. Like Pep Guardiola he is seeking to move through the middle than wide. City के सारे players they're like converging. इसलिए Kovacic को लाया, playing Alvarez in the middle, play through the defense, through the middle. So something interesting is happening, I think, regarding the width. Teams are trying to, especially City and stuff, are trying to cut off the width. Big up Ashish. People in the chat big up again, do go in. But in every match क्या हो रहा है, you are just giving space to Bellingham. In every match you are just giving space to Bellingham. तुम लोगों का लिंक अप प्ले ठीक नहीं है. क्रूज के साथ मैंने उस दिन मॉड्रिच का लिंक अप प्ले देखा, नॉट वर्किंग. रॉड्रिगो के साथ मॉड्रिच का लिंक अप प्ले नॉट वर्किंग. अब यार विनीशियस जूनियर थोड़ा सा ज्यादा ऑफेंसिव हो रहा है. तो यार टोटली मैं जो देख रहा हूँ दिस टीम इज नॉट स्टेबल. लेकिन एक नाम जो है, जो ब्रांड है रियल मैड्रिड का, आई थिंक ये थोड़ा सा लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा है. लेकिन आज का मैच मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. आई थिंक ये वन साइडेड मैच नहीं होगा. आई डोंट थिंक सो. जो सब लोग बोल रहे हैं कि यार मैड्रिड विल इजीली विन, ये मैं भी बोला, सब लोग यही बोलेंगे आई थिंक, आई अज्यूम. बट मुझे क्यों लग रहा है कि दिस रियल मैड्रिड, एवरीवन इज सेइंग इन अदर चैनल्स टू, कि बोल रहे हैं कि भाई रियल मैड्रिड एक मैच से क्या होता है एथलेटिको द मैड्रिड के अगेंस्ट. बट यार तुम अगर देखो सारे मैचेस इन ला लीगा उन लोगों के, अल्मेरिया को छोड़ के, लीव द अल्मेरिया मैच एंड लीव द जिरोना मैच. जिरोना छोड़ दो, जिरोना ने अच्छा खेला, गोल कंसीड कर लिया तो इसमें क्या है. लेकिन मुझे जो लगता है यार आज थोड़ा सा यार पल्ला नापोली पे भी भारी हो सकता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो सेंटर बैक है किम, ही मूव टू बायर्न म्यूनिक. ओके, ये गलत हो सकता है क्योंकि देखो, अगर देखो रियल मैड्रिड अपने आप को बहुत बार स्विच करता है. वो लोग क्या खेलेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. फर्स्ट हाफ में आफ्टर 80 मिनट्स क्या करेगा, किसको सुपर सब करके लेके आएगा. बट आई थिंक विनीशियस जूनियर है. अगर विनीशियस जूनियर नहीं रहता तो यार पल्ला पूरा नापोली पे भारी होता. बट विनीशियस जूनियर एंड योशेलू इज आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल इन लास्ट 2 or 3 मैचेस. सो यार मुझे तो लगता है, दिमाग बोल रहा है रियल मैड्रिड, बट आई डोंट नो मैन, एनीथिंग कैन हैपन. नहीं पूरा एग्री करता हूं, पर मुझे पता क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये आशीष इज कॉलिंग आई थिंक फतेह भैया हर्ष बेनीवाल. इज इट? किसको? I know he always किसको बोल रहा है? हर्ष बेनीवाल. आई नो व्हाई कॉलिंग आउट. आई थिंक ये मुझे भी पता. Who is Harsh Beniwal, man? even I had to look it up. I googled it up. So he is some Instagram, YouTube personality. Yeah, he's Carry Minati. Yeah, Ashish, you can ask Fateh Bhai and me. You can ask Fateh Bhai about Syria. You can ask me about La Liga, about the world literature, novels, psychology, physiology. मुझे यार ये हर्ष बेनीवाल कौन है मुझे भी पता नहीं है. थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है the structure. I think मैं इसमें ये कहूंगा कि अरे ओशिमे को फेंक दिया यार. हाँ, मेरे को पता क्या लगता है, नापोली के लिए शायद यही मैच है जो उनको कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रख सकता है. लाइक जो बिहाइंड द सीन्स ऑस्ट्रेलियन के साथ चल रहा है, शायद यही मैच है जो एनर्जाइज कर देगा कैंपेन को, कि अगर यहाँ पे जीत गई नापोली, क्योंकि सीरिया में अच्छा नहीं खेल रही नापोली, दे हैव नॉट बीन गुड. फ्योरेंटीना को फेस करना है इस हफ्ते में, एंड फ्योरेंटीना अच्छा फॉर्म भी फाइन कर रही है अभी. लाइक 14 पॉइंट है 7 मैचेस में. तो आई थिंक ये एक मैच है जो नापोली की इंपॉर्टेंट है. और इसलिए मैं यहाँ पे सिटी अनप्लग पे आऊंगा. सिटी अनप्लग जी, आप लाइक यू विल बी फाइटिंग फॉर चैंपियंस लीग टिल द एंड, वो हम भी जानते हैं मैनचेस्टर सिटी है, वो इस न्यूकासल से हार चुके हैं. बट चलो
तब भी एक मैच तो जीत ही जाओगे। तो रियल मैड्रिड को आप कैसे देख रहे हैं, योर बिग कंपेटिटर की, लाइक रियल वो आपको थ्रेट नहीं लग रही है लास्ट ईयर जैसी, या इज गोना बी अगेन कि सिटी विल बी द बेटर वन? चैंपियंस लीग में चैंपियंस लीग I think पूरा डिपेंड करता है सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन व्हेन यू गेट इनटू द नॉकआउट, क्योंकि सिटी को लास्ट ईयर इफ यू कंपेयर अंटिल जनवरी द एंड वी वर थ्रैश, until January the end we were Oh, thrashed. Napoli take the Then lead. Oh, आप लोग पीछे हो? नहीं, मेरा टाइम स्पैन है 18-20। Okay, तो आप लोग पीछे हो? What happened? What happened? Did you really even scored, man? corner. No, I think Napoli scored. Oh my God, Napoli scored. My predictions are becoming real. My predictions are becoming real. I think Fateh Bhai just triggered me out. मैं सोनी लिव पे मैच देख रहा हूँ। भाई I think big up Sports Union guys, go and subscribe Sports Union, go and subscribe Shivam's channel, Man City वाला channel है उसका, the third Man City channel creator in our India. I think भाई my tactics will not say anything wrong today, but I think पल्ला भारी है। जो मैंने predict किया था Napoli will be the, I think Napoli first आएगा यार ग्रुप में। अब तो मैं बोलूंगा Napoli scored. I think हम पीछे नहीं थे एक्चुअली। मैं फतेह भाई के साथ बात करते करते मैंने स्क्रीन पे नहीं देखा। बाय द वे गाइस, Napoli scored and मैं जो बोला था तुमको कि क्विक काउंटर टीम पे जो खेलेगा, डिफेंसिव स्ट्रक्चर इतना गलत है इस टीम का, गोल हो सकता है। बट आई डोंट नो हाउ कम Girona lost to Madrid. Goal is from a corner, right? I think it's Ostigard, na? Let me check. No, it's Lobotka. I think Lobotka scored the goal. It's Lobotka. Oh yeah. Yeah, corner. And again same goes for me. पर overall I think मैं expect कर रहा था Napoli ने थोड़ा सा अटैकिंगली बेटर स्टार्ट करा था। और फतेह भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे थे कि Napoli के बारे में जैसे बता रहे थे कि थोड़ा डिफेंसिवली इशू है, तो आपको क्या लगता है कि अब Napoli को क्या करना चाहिए? Like will Napoli try to keep attacking या थोड़ा सा शायद रिजर्व? It's Ostigard. It's not Lobotka. It's Ostigard. Oh sorry. No, I think Napoli will keep attacking. They are a very attacking team, but because I don't think they should be relying on Nathan and Ostigard just yet. I think this is probably it's a very young partnership. पिछले साल ये players नहीं थे इनके, तो defensively I don't think they should trust them just yet. So I think they need to keep attacking, get the second goal, because in my opinion Real Madrid still Anurag, they still have 3 goals in them. That is my opinion. Like I think they still have goals. So I think Napoli should keep attacking. Don't sit on your laurels. बट इसमें आपको लगता नहीं फतेह भाई, जैसे डिफेंसिवली मैंने रियाल को यूनियन बर्लिन के खिलाफ भी देखा था, लाइक यूनियन बर्लिन इतनी अच्छी टीम नहीं थी, बट स्पेसेस बहुत ही थी रियाल ने, कि जहां पे जिरोना के खिलाफ भी, लाइक जिरोना के मैच में बहुत चांसेस है जिरोना के पास, बट दे कुड नॉट फिनिश। अगर आज नैपोली है, नैपोली भी लाइक नैपोली कैन इवन स्कोर 2 or 3 टुडे। तो अनुराग भाई आपको क्या लगता है अभी मैच आगे आपको किस वे में जाते हुए लगता है? क्या नैपोली सिट बैक करेगी या Napoli is playing with 4-3-3 formation, okay? And मैंने जो बोला था आपको कि they will switch on, Real Madrid will switch on to such a formation that will help Bellingham, that will help the attacking midfielder specifically. They switched on into 4-3-1-2. अगर तुम्हें 4-3-3 को रोकना है तो तुम्हें कॉर्नर्स और 4-3-3 विंग अटैक या फिर पिन पॉइंट क्रॉसिंग के लिए आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, एंड ये लोग 4-3-1-2 से खेल रहा है। फिर भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे अगर मैं जाऊं तो मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं कि नाचो रुडिगर तो ठीक है, कामाविंगा को लेफ्ट बैक बनाने का जो फॉर्मेशन अंचेलोटी कर रहा है, आई थिंक इसके लिए उसको थोड़ा सा पछताना पड़ेगा बाद में जाके। क्यों? मैं इसका टैक्टिकल एनालिसिस मेरे शो पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक्सपोज नहीं करूंगा वो, बट आई थिंक यार कार्वाहाल का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन एक चीज अच्छा है कि देखो बेलिंघम के साथ क्रूज का लिंकअप प्ले मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है, एंड ऑल्सो चुआमेनी वल्वार्दे बहुत बार क्लैश हो रहे हैं इन डिफरेंट मैचेस के, उन लोगों को पता नहीं कौन बॉल पकड़ेगा कौन छोड़ेगा, एंड और एक चीज मैं आज उन लोगों के पास कोई सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, उन लोगों ने 2 लेफ्ट विंगर एंड राइट विंगर को दोनों सेंटर फॉरवर्ड बना के रखे हैं, दैट इज विनिशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो। सो आई थिंक रियल मैड्रिड नीड्स अ वेरी गुड सेंटर फॉरवर्ड और अ स्ट्राइकर, तो आई थिंक यार यही पे दिक्कत होगा, इसीलिए उन लोगों का लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, एंड we all know the brilliance and the extraordinary performance and the talent of Bellingham. वो लोग डिपेंड कर रहे हैं कब मिडफील्ड से बेलिंघम को पास आएगा, कब 2 विंगर्स नीचे आएंगे एंड बेलिंघम को स्पेस मिल जाएगा, जब ओपोनेंट टीम का जो डिफेंडर से उन लोगों का कुछ स्ट्रेंथ या स्टैमिना बाकी नहीं रहेगा तब एक गोल आ जाए। बट यार a team like Real Madrid in a league like UCL you cannot do this. ला लीगा पे तो चल सकता है यार,
बट यार आई थिंक थोड़ा सा, लेकिन मैं So sorry to फतेह भाई interrupt. Man United won, Galatasaray won. Wilfred Zaha ने गोल मारा and Galatasaray equalized. So अनुराग भाई happy होंगे. I think, Fateh Bhai, what happened? So, Fateh Bhai, you know, am I becoming the Nostradamus, man? I don't Absolutely, know. man. I mean, if Napoli win today and Galatasaray get something there, then you are like I remember that show when you said that Man U will not make it, and what a story that will be because the pressure on Ten Hag already, like I think I heard some Zlatan Ibrahimovic was saying something, so it's like he just can't get a break, he just can't catch a break. The kind of pressure that they are under, amazing. And You is know, the Zaha like problem with उनका the पुराना problem with youth the Man product. U group is the Galatasaray drew 2-2 with Copenhagen at home. Yeah. And every other team will beat Copenhagen home and away, Bayern and United. So that is where Galatasaray. I have predicted previously, I have predicted that Galatasaray will perform very well in UCL. But after Copenhagen versus Galatasaray match, because I'm a huge fan of Martins, as you guys know, I'm a huge fan of Martins, as well as ZH is also there, if I'm not wrong. Yeah, and Yeah? Icardi. ZH, Icardi. I think. Yes, Icardi. Yeah. But I think यार मैन यूनाइटेड के परफॉर्मेंस यार मैंने जो प्रेडिक्ट किया था आफ्टर वाचिंग कोच रिसर्च शो एंड टिफो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी ट्रू टुडे. अगर कैसेमिरो ने, आई डोंट नो, ये कैसेमिरो का परफॉर्मेंस है पिछले सीजन से इस सीजन पे बहुत यार इट इज डिग्रेडिंग डे बाय डे. अनुराग भाई बट मैनचेस्टर प्रीमियर लास्ट मैच लीग में 2 गोल्स. Ooh, लाइक मैंने पूरा मैच Napoli देखा था almost जैसे scored a second. नापोली में Almost. Almost, man, almost. है ना यार. हाँ, What is your time time stamp stamp, Shrey bhai? है What ना is your ये? time stamp, Mohan, by the way? Mohan, what is your time stamp, man? Timestamp is Oh, it was very close, man. 24:46. Yes. Hurry. Oh. By the way, is it a handball? Is it Kepa? They're not नहीं, I sure. think it's No, it's body not a पे touch handball. हुआ है. Oh, That's no, not it's handball. not. It's not. Actually, I'm If watching. that is Why given not? in handball, I'll leave the show. That can never be a handball. By the way, it will be a Hands back. corner. अरे पहली बार देख के मुझे लगा था basically highlight देखा मैंने Yeah, recap yeah, देखा. By the way, it will be a corner for Napoli, guys. Yeah. We पर will मैं take अपने it. यूनाइटेड के क्या कर रहा था, यूनाइटेड का जिस तरह मैंने मैच पे देखा था पैलेस के खिलाफ, आई थिंक अटैकिंगली भी लास्ट ईयर उन्होंने 58 गोल्स मारे थे और रैशफोर्ड ना इतना सेल्फिश हो गया है कि रैशफोर्ड सारी चीजें लाइक इज ट्राइंग टू बी अ रोनाल्डो डू ऑल अलोन और टीम में बैलेंस नहीं आ रहा. तो एनहान को भी Like the famous Pandit Mohan Babu say previously, I have also checked it. That Rashford thinks himself as CR7, but Mohan that day mentioned the important point that CR7 didn't use a track back in his. मतलब वो track back नहीं करता था, and Rashford जो कर रहा है, I think he's becoming very much selfish day by day. I was watching Man United matches the other day. And in the modern game, you can't do that. You have Yes, to track. you can't do that. You can't do that. और मैं And By फतेह the with way, Man United, I think. मतलब I just want to ask you a question. आप बार्सिलोना को आग बंद करके how far कितने दूर तक आप देख पाते हो? अरे कामाविंगा with the ball, I have to refresh my 1-1. screen. 1-1. Oh my Fateh Bhai, please. God, he's giving me spoilers, यार. Oh, acha, I am very far ahead of Fantastic you guys. finish. Fantastic finish. Fantastic finish on Vinicius Junior, I think. Fantastic. From Vinicius Wow. Junior, it was Good very goal, good. yeah. This man, Fantastic मैंने बोला goal. था only Vinicius Junior can save them. The same problem. देखो midfield is not getting into the wingers. They are playing as a center forward. देखो गोल मार रहा है. But Anurag Bhai, just a question. Anurag Bhai, just a question. Don't see Real Madrid is not playing well in La Liga, but don't you think? I mean, I'm not a Real Madrid fan or something, but I know that. don't you think when a team does not play well and they're still finding ways to win, it's a kind of a positive thing for a team? Of course. Why not? Of course. Why not? But I think his goal का सारा credit has to go to Bellingham. Positioning, press. Yeah. ये टीम का जो देखो, ये टीम का जो गोलकीपर है वो नहीं है, कोटुआ नहीं है, मिसिंग है. विनीशियस जूनियर वाज इंजर्ड. Yeah. ओके, उन लोगों का स्ट्राइकर जिन लोगों ने उनको यूसीएल जितवाया, दैट इज बेंजेमा नहीं है. योशेलू इज नॉट दैट लेवल ऑफ अ प्लेयर. कोई भी प्रॉपर दैट दिस टीम इज फाइटिंग, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्रूज एंड मॉडरिच भाई, दे आर बिकमिंग जस्ट बुड्ढास डे बाय डे. सो आई थिंक मिडफील्ड और स्ट्राइकर और एक अच्छा सा गोलकीपर उन लोगों को चाहिए होता है यूसीएल को लेके. मैं नहीं बोलना चाहता, बट मैं मोहन के साथ आई विल एग्री टू मोहन.
This is a very But much I actually think Atletico Madrid and Barcelona are the strongest teams in La Liga, not Real I think Madrid. Fateh Bhai will be very much happy after listening to this. Fateh Bhai, सुना आपने उसने क्या बोला? क्या बोला? उसने क्या बोला? Atletico. Repeat I it. was Atletico watching, Madrid. there was a penalty claim against Inter in the Inter Benfica game, so I was just looking at that. इतने मैचेस चल रहे हैं. I am just in a position of a Ferrari. फतेह भाई इतने matches कितने चल रहे टीवी हैं. है By the आपके way, पास? a yellow कितने card to स्क्रीन है आपके Camavinga. पास? No, Yellow card I to am an Camavinga. Inter supporter ना, तो वो मैच तो लगा के देखना ही पड़ेगा. I was telling Shrey this. I was like, And आज someone कैसे please होगा? ask Fateh Bhai which team Fateh Bhai supports in La Liga. Just ask him. No, in La Liga, see, I have a lot of respect for Barcelona, No, I know. and Athletic de Madrid. yeah, no, that is just a photo. Atletico Madrid, I don't really support them. ऐसा नहीं है. In fact, I used to be as a kid, I used to be a supporter of Valencia when Benitez ये and आपने Hector मुझे Cooper बोला था was. that he used to support Valencia. लेकिन आप तो Valencia, फोटो देख के सब Allah. लोग घबरा जाते हैं. हाँ, but अभी तो वलेंसिया का बहुत बुरा हाल चल रहा है. And I used to हाँ really like, अरे वो super Depo team थी ना, Deportivo La Coruña. That was so हाँ strong. डेबिट ला करो ना. What a team! Like What a Roy team it Mackay, was. Diego Tristan, Pandiani. Well, I miss because with that northern Spain, it used to always keep raining at that stadium, you know. So Celta Vigo and Deportivo and Real Sociedad, you always play them in the rain, and it's the atmosphere is amazing. So I really miss those days, and I feel like कहीं ना कहीं both Barca and Real have really that monopoly, the जो duopoly आप लोगों ने create किया ना over the last 15 years, that's somehow not been good for overall La Liga. Somehow it is not good for over. That's why I want a team like Girona to flourish. Girona, That's why I want a team like Girona to flourish and win a La Liga for a single season. मैं उस दिन मोहन को भी बोल रहा था इस सीजन छोड़ दे क्योंकि इस सीजन में अगर जाबी ला लीगा भी नहीं ला पाया तो भाई वो खत्म है. Big up Darren bro, big up. I think Big up Darren bro, hope you're well and good. there is low attendance in this. धनराज भाई कह रहे हैं नेपोली को आज जितवा दो. सो आई थिंक मेरे को लग रहा है बार्सिलोना फैन है एंड आई थिंक बहुत सारे लोग चाहते हैं नेपोली जीते. अनुराग भाई तो यस भाई चेल्सी फैन कोई नहीं आ रहा. चेल्सी फैन कोई नहीं आ रहा चैट. यार हमारा गम क्यों So my चैंपियंस लीग. question is to you: what do you think of Kepa at Real Madrid? Have you followed? Like I think Anurag. I think he's been very good. I Kepa at Real Madrid. See, मैंने कुछ चीजें देखा. केपा का डिस्ट्रीब्यूशन चेल्सी में क्या था? Because you फतेह भाई आप जानते हो ईपीएल मैंने देखना छोड़ दिया बहुत सालों पहले. मतलब ऊपर से मैं 1 2 3 4 5 फेमस मैचेस में देखता हूँ. केपा का डिस्ट्रीब्यूशन इन रियल मैड्रिड इज बिकमिंग मच मोर इवन ट्रैश. डिस्ट्रीब्यूशन केपा का बहुत गंदा चल रहा है. यू कांट इमेजिन आज का मैच में क्या होगा. आई डोंट नो. बाय द वे मैं डर के देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है फतेह भाई मुझे पहले रिजल्ट बोल देगा. नहीं प्लीज मैं यार कम मैन कम ऑन यार. See 9 inside the box. Yeah. पर नहीं कैपा पे पता है मैं क्या कहूंगा फतेह भाई जितना मैंने चेल्सी में फॉलो करा है कि जब वो आया था ना. He's not asking about Chelsea, he's asking about Real Madrid. मैंने जो देखा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब है केपा का. लाइक मैं ये कहूंगा रियल में इंप्रूवमेंट बनाई है. Very good. बट पता है क्या एक मैं अभी भी कैपा को वही कहूंगा कि कैपा का अभी भी जब बड़ा स्टेज आएगा ना वी कैन ओनली सी हिम देन क्योंकि उसकी मिस्टेक्स उसकी गोल कीपिंग में अभी भी लाइक हाइट का मुझे लगता है चक्कर. आई नो मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि गोलकीपर छोटा है तो ही कैन नॉट डू वेल बट आई थिंक एज अ गोलकीपर उसकी हाइट थोड़ा सा क्रॉस कलेक्शन में थोड़ी अभी भी उसको इंप्रूवमेंट है. तो आई वांट टू सी हिम इन सेमीफाइनल चैंपियंस लीग में व्हाट इट डज वहां पे मिस्टेक्स क्योंकि अभी भी लॉन्ग शॉट्स में आई थिंक मैंने ज्यादा ला लीगा में देखा बहुत अच्छे से ट्राई नहीं करा. प्रीमियर लीग में सारे करते थे. सबको पता था केपा वाज वीक. सारे 40-30 यार्ड से ट्राई करते थे लॉन्ग शॉट. अरे केपा के ऊपर एक प्रेशर भी है. अरे केपा के ऊपर एक प्रेशर भी है. वो किसके रिप्लेसमेंट पे आया? वो कोर्टुआ के रिप्लेसमेंट पे आया यार. आई थिंक केपा इज नाउ बिकमिंग जस्ट लाइक उसका एंजाइटी इज जस्ट लाइक अभिषेक बच्चन because he has to fulfill the place of Amitabh Bachchan man. वो क्या and even it man केपा के ऊपर बहुत प्रेशर है यार. मैं उस दिन देख रहा था केपा उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना खराब चल रहा है. मॉडरिच उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गया कि क्या पास दे रहे हो यार किसको दे रहे हो. उसने 3-4 बार मायोका के प्लेयर्स को पास दिया केपा ने. कैन यू इमेजिन? आज फतेह भाई ने पूछा ये कोई ऑब्जर्व नहीं करता. मैं उस दिन टैक्टिकल एनालिसिस करूंगा सोचा था लेकिन मायोका हार गया. जीतता तो करता मैं. तो मैंने उस दिन देखा मॉडरिच उस पे गुस्सा हो गया था कि यार किसको पास दे रहे हो. सो आई थिंक ही हैज सम इंटेंस प्रेशर एंड एंजाइटी इन हिज हेड. सो जो होता है वो होता है. बट आई थिंक केपा इज अ बिग मैच प्लेयर. मैं फिर भी बोलूंगा आई अप्रिशिएट हिम अ लॉट. आई थिंक स्लोली ही विल फ्लरिश. अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो यार और भी अच्छा है. लेकिन यार कोर्टुआ के प्लेस लेना इन अ टीम लाइक रियल मैड्रिड इट मेक्स गट्स मैन. एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर मैं ऑनेस्टली कहूंगा आई थिंक होपफुली विल कमिंग बैक क्योंकि मुझे लगता है कि रियल वोंट साइन हिम
क्योंकि कोटो विल बी बैक, तो रियल वुड इवन साइन हिम, मैं ऑनेस्टली कहूंगा. तो आई थिंक ही विल बी कमिंग बैक टू चेल्सी. और एज अ चेल्सी फैन आई वांट हिम टू डू वेल, क्योंकि वी हैव साइंड हिम फॉर 72 मिलियन. लाइक अगर हम उसे सेल भी करें, वी नीड समथिंग बैक. गोलकीपर्स यूसीएल में मिस्टेक कर रहे. ओनाना ने उस दिन क्या किया? उस दिन मैन यूनाइटेड, ओनाना ने उस दिन क्या किया? वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ओनाना. क्या किया उसने? सेम No, but गोलकीपर्स मिस्टेक तो no, करेंगे. no, but with Man United, I think pressure अलग होता है. डेविड डी गीया भी उसका फर्स्ट सीजन पूरा मिस्टेक्स था Man फिर भी United. डेविड द गिया वाज अ वेरी गुड गोलकीपर, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत खराब चल रहा था. आई No, रिमेंबर no, no, no. When David De Gea arrived in his first सीजन वाज season वेरी to बैड. replace Michael. बहुत गंदा फर्स्ट सीजन था डेविड डी गया का. Oh, Madrid lead, Bellingham wow. 2-1. And it's Jude Bellingham. Oh, It's Jude Bellingham. I knew it. 2-1. Yeah, I Wow, told you what a guys, player. like this Napoli defense. Just look, Abhi, they've gone right through the middle. You know, it's not working Fateh for them. Bhai, And then, I was just thinking, midfield of Rodri, Jude Bellingham, and Kevin De Bruyne. What it would have oh done. my God! Oh my I, God, you यार should क्या have, you बोल should रहे have हैं gone for him. You should यार? have totally. Gaidila सोच. You give up your poisonous dream, man. With Erling Haaland up front, that would have been a dream. That would, yeah. Because there's everything in that midfield: physicality, pace, creativity, power. Yeah. Ah. But the night is young. You guys, you all don't know. The night is very much young. Let's see what happens. This is UCL, man. Yeah. Yeah. What's But happening? just in the the I thing think this Kepa's Napoli's never- defense, they're not there with their structure, but the defense system, भाई इतना offensive आने का क्या जरूरत है भाई? बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, this defense needs to be improved. I think Kim का ये transfer होना to Bayern Munich, क्योंकि मैं सेरिया भी देखता हूँ ना, Bundesliga सेरिया, and what is happening to Union Berlin, man? क्या हो रहा है Union Berlin का? भाई they're in the 11th or 12th position, Stuttgart second पे है यार, और आज Leverkusen भी हार गए अपना मैच ब्रागा से. प्रागा से. अच्छा, व्हाट इज हैपनिंग मैन? आज तो मैं नहीं देख पाया, बट यार क्या चल रहा है यार? यूनियन बर्लिन इज इन 11 और 12 पोजीशन. क्या चल रहा है? And Union Berlin was leading 2-0, you know? Union Berlin was leading 2-0. अरे मैंने देखा वो. पर मैं पता तो क्या देखता है? हूँ ना मैं. मैंने जितना यूनियन बर्लिन का देखा भी था ना, मेरे को पहले ही लगा था जो वो टैक्टिक्स कर रहे हैं ना, वो बहुत अनसस्टेनेबल है. लाइक जितना आप डिफेंसिवली करने की कोशिश करोगे ना, एट सम पॉइंट यू विल बी. फतेह भाई की शक्ल देख के लग रहा है कुछ और हुआ है. नहीं. Wow, Vinicius Junior 1-on-1, opposite की pull back हुए. Vinicius Junior 1-on-1, Wow, गया यार. अंदर गया. He escaped the shot. जब भी फतेह भाई विनीशियस भाई गया जूनियर, मैड्रिड. जब भी विनीशियस जूनियर गोलकीपर के पैरेलल आता है, उसका पुराना बुखार है, वो अभी भी इंप्रूव नहीं कर पाया. उसका शॉट अकुना की तरह बाहर चला जाता है, उसका फिनिशिंग में प्रॉब्लम है. जब गोलकीपर के साथ वो 1v1 आ जाता है स्ट्रेटली, ये विनीशियस जूनियर का पुराना बुखार है ये. So you can't do about it. वो एच से ज्यादा गोल करता है. विनी लॉल, अरे यार अभी जितवाना दे, बिकॉज दिस इज बेलिंगम एंड विनीशियस जूनियर. मैंने बोला था ना, आई डिडंट वांटेड विनीशियस जूनियर टू कम बिफोर मैच. सोच रहा था कि यार विनीशियस जूनियर शुड कम बैक आफ्टर दिस मैच. मैंने उस दिन कहा था ना, इज टेरिफिक, इज वेरी मच डेंजरस. लेकिन फिर भी लिंक अप प्ले पे गोल नहीं हो रहा है. आई थिंक इट्स पर्सनल इंटेलिजेंस. मैं तो बोलूंगा द मैच ऑफ मेक्सिको वर्सेस अर्जेंटीना इन वर्ल्ड कप, वो जो गोल ओचुआ के खिलाफ मेसी ने मारा था, it's not about any link up play, it's about personal intelligence and personal experience से उसने गोल मारा, personal brilliance है rather. तो यही हो रहा है मैड्रिड में, एक प्लेयर्स अच्छे खेल रहे. Kamavinga has left the left back position, वो midfield join कर लिया with 4. देखो पीछे से आ रहा है, and now they are attacking. Center forward को Vinicius Junior, अच्छा देखो. Now Bellingham is becoming so much offensive. अच्छा टैक्टिकल एनालिसिस की लगेगा. नाउ दे विल अटैक फ्रॉम द राइट विंग. अरे यार क्या चल रहा है? कम ऑन यार. 4-3-2. बड़ा जी मैड्रिड सो डेंजरस है. मतलब the way they changed the game 1-0 down और जो उन्होंने स्पिरिट रखी, that was fantastic. No, that is all about Madrid. I am a Barca fan. That doesn't mean कि मैं मैड्रिड के बारे में कुछ भी बोलूं. I think that's Madrid is. बट यही मैड्रिड एंड बार्सिलोना ने ला लीगा का, अरे यार क्रूज. बट Fateh Bhai, I just want to ask, that Napoli don't concede a third before half time. You know, like the way the game is going, they have to sort of survive at they least. can. I think it's corner by Toni Kroos. अरे बाप रे बाप. Madrid are all over Napoli.
Yeah, exactly. I think they need to survive this half. Like another goal conceded, there's no way back. ये मोमेंटम को खराब करना पड़ेगा. This momentum is very vicious. ये मोमेंटम को खराब करना पड़ेगा. मैं फतेह भाई से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. क्यों? क्या? एक मिनट. Watch. ओ फतेह भाई नहीं बोलेंगे. आज तक मत बोलो. I have to say it, man. Yeah. That's why. Oh, Good save. Very good save by Oh Kepa. my God, Osimhen! Oh my Very good God! save This from UCL Kepa. nights, I'm enjoying it, man. very I'm good save enjoying from it, Kepa. man. But I think Osimhen से थोड़ा सा बेटर की उम्मीद थी. Oh, good. These, against a team like Real Madrid, आपको ये वाली chances यूरोप में लेनी पड़ती हैं. Like you can't, like it's a great leap, but I think good height for Kepa. You have to like, take it. You have to Yeah. take it. Yeah. First hand experiences City के साथ Gabriel Jesus. I don't want to use some words on the stream, आज but he missed goal कर दिया one Gabriel on Jesus one. ने. Fateh Bhai is here. आज छोड़ दे. Fateh Bhai is here. आज छोड़ दे. मेरे चैनल पे कर लेना वो. 3 और 1 गेबल on जीसस से गोल भी मार दिया मोहन भाई UCL आज. semi-final. Yeah. What is Quora, man? What आर्सेनल Quora जीत is रही है. this, man? Come आरके on, लेंस Quora. ने आर्सेनल 1. RK Oh. Lens is like the bottommost team in that group, right? But that's good, man. Guys, matlab मेरे को one of my first memories is this group where Arsenal went out in the group stage against Lens and against Dinamo Kiev. मतलब इनका group ये था Dinamo Kiev with Shevchenko way back in 98-99. And Arsenal, I think that was the first time that Arsene Wenger took over a team in the Champions League. Yeah. And they went out. Yeah. Like Lens was like a bit of a powerhouse in You will France. not believe I've started watching football. मैं तब से फुटबॉल देख रहा हूँ. मैं आर्सेनल को देख रहा था तब. I think Dennis Bergkamp, Pires, Vieira, and Yes. also like लेकिन तब आर्सेनल फैंस इतना टॉक्सिक नहीं मतलब and also मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको. And a lot of other players and my favorite player was Dennis Bergkamp. My favorite player was Dennis Bergkamp, the Iceman. I used to love him a lot. Thierry Henry कितने थे आर्सेनल पे तब. But I think Arsenal fans जो मैं ये कर रहे कहूंगा जो जनरेशन आफ्टर दैट आई थी Nick Fabregas, सामे नासरी उस टाइम पे वो भी बहुत अच्छे फुटबॉल खेलते थे. पर मैनचेस्टर सिटी, बार्सा ने फिर लाइक आर्सेनल बिकेम अ सेलिंग क्लब. लाइक सारे के सारे लेके एंड लाइक आर्सेनल का पीरियड था जहां पे वो अच्छे Fateh प्लेयर्स Bhai प्रोड्यूस का कर रहे player थे. is just giving me anxiety. What Fateh Bhai is doing ना, just Arsenal में. हुआ है but नहीं हुआ कुछ. But I think Napoli छोड़ने हारेगा ठीक है लेकिन छोड़ने तो नहीं वाला है. I think यार थोड़ा सा जोर से मार रहा है. Yeah, that was, अभी हम बात कर रहे थे कि Napoli are under a siege from Real Madrid, but last 3-4 minutes they've come out again, so but I still feel on the counter now Real will get the next goal also, maybe somewhere in the second half, middle of the second half. That's Real Madrid. Napoli, That's all about Real Madrid. Napoli defense, and to win the league and then lose your players the way they did. I mean, losing Kim for 50 million and मतलब वो बहुत ही ना आप you lost your coach Coping Dortmund. Yeah, exactly. And losing their coach, for example, Rudy Garcia, I think he beat Man City once in the Champions League, the COVID years. I think Rudy Garcia. he beat Manchester City. Yes. लियोन का मैनेजर था. But that was a one game or something ऐसे कुछ. One off game. कोविड के चक्कर में one match था. Yeah. One off game. So I think Napoli have really, like they've let the initiative go. अगर वो सब players रखते, coach रखते, so I think this year they would have been even better because last year the way they were playing, the way they played against Liverpool, at home. Can you believe it? Inter and AC Milan are playing in the semi-finals and वो लोग सीरिया जीत रहे हैं अपने लीग पे. ये भाई they have. रोनाल्डो का मुझे याद है. And Messi in 2013. रोनाल्डो का मुझे याद है. रोनाल्डो was आर्सेनल कर सकती थी but they let it go and the rest is history. They also almost signed Luis Suarez, वो जो $1 वाला वो जो bid किया था, that was madness. But yeah, I mean, I think I hope that Lens can get something. I think it was such a good story, and they lost a lot of players to Saudi Arabia. I think Lens this year. Yes. They lost, I think, their main player. I think their captain. He went. Another player went. So the name was. Yeah, नाम तो मैं भी भूल गया हूँ. मैं से by the way, मैं क्वारास्केलिया का नाम भी भूल जाता था. इतना बड़ा नाम है. 2 महीने पहले मुझको याद आया वो नाम.
I think Kvaratskhelia might go to Real Madrid क्योंकि वो बोल रहा था मैच के पहले I admire Real Madrid and Madrid have, it seems that Madrid's plan B if they don't get Mbappe is Kvaratskhelia. I think they can also go for Osimhen, ना मोहन? वो तो No, Osimhen they के won't. पीछे भी जा सकते हैं. Why not? No, they want Kvaratskhelia it seems. I don't know why they're not going for. Kvaratskhelia is one of my favorite players, and if Kvaratskhelia गया मैड्रिड पे यार, I'll be a total mess. Please ऐसे मत बोल Then यार. where will he play? Because Vinicius occupies that हाँ, spot. Vinicius Mbappe भी likes है. to play from there. So where will he play then? No, I think Ancelotti wants to play Vinicius through the middle Okay. or Rodrigo through the middle probably one through the middle and then yeah. But I think Ancelotti, like being very honest, अगले साल रहेंगे भी नहीं. Like I think next year they will get a new manager Real Madrid. Like I Ancelotti think, का I physique think, is. I think I know who will join Madrid. I think Zidane is going for a country or some like वो national team के लिए जा रहा है वो. I No, think Zidane is joining Marseille, right? I think Yeah, Nagelsmann will join No, Madrid. Nagelsmann has joined Germany. He's नहीं नहीं coach of Nagelsmann German सिर्फ national पार्ट टाइम team. कॉन्ट्रैक्ट पे गया है till Euros. हाँ part time That's पे. I it. think Real Madrid will take Nagelsmann. तू देख लेना मेरी बात. But Zidane is going to Marseille, which is interesting. And Saudi Marseille Arabia is because taking it over is his Marseille. childhood. उसका वो वहाँ पे वो था यार. It is his place. So यार I think Zidane वैसे ही club join करता है in which he is emotionally correct, emotionally connected. So I think ठीक ही किया. No, but Good to see. but he also wants, the rule is if Saudi Arabia invests 400 millions on transfer window, then only he'll join Marseille. No, those ज़्यादा Something है. like that, कुछ rules रखा उसने. ये तो कुछ ज्यादा ही है. ये तो यूटोपियन हो गया totally. Yeah. But yeah. और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पहले अंकित भाई इन द चैट बिग अप अंकित भाई फटे प्लेजेंट सरप्राइज व्हाट्सएप बिग अप अंकित भाई पीपल डू वांट टू से Ankit might be Bhai, sports yes. plus. Big up I'm Ankit looking भैया. forward Ankit भैया. to have all you guys on Ankit's show also for next week's like watch along. Absolutely, Ankit bhai, always a pleasure bhai. Do let us know and big good to see you Ankit bhai. And फटे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था अनुराग भाई से भी एंड मोहन भाई से भी लाइक ओसिमन इज ही द फ्यूचर रियल मैड्रिड स्ट्राइकर जो आप देखते हैं रियल मैड्रिड फ्यूचर में साइन करेगी? No, I don't think he'll go there. I think that उनका तो Mbappe ही होगा. Mbappe, Vinny and Rodrigo will be their front three, playing interchanging something like that next year. I don't see Osimhen going there. I see Osimhen going to the EPL. Somebody like Newcastle or Chelsea or somebody like that because you guys also need a striker. I think I told it previously. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने बोला था Chelsea needs a 6'2" striker और यार एक लंबा striker उन लोगों का चाहिए Chelsea को and also Barcelona क्योंकि Lewandowski का performance is not मतलब he is not doing well ना and मुझे लगता है लेकिन a question to Fateh Bhai, do you think that the link up play between Mbappe, Vinicius Junior and Rodri मतलब वो अच्छा होगा link up play तीनों का? I don't know. Does Mbappe want to relinquish playing on the left? Is the big if he's willing to be that striker and then to link up play हो सकता है. But I don't think he will want to. I think Fateh Bhai is a genius and a orator of vintage football. That is 90s and early 2000 football. Fateh Bhai मुझे याद है वो इंग्लैंड वाला टीम माइकल ओवेन, डेविड बेकहैम, जेरार्ड ईगो प्रॉब्लम्स के लिए उस टीम ने कुछ नहीं जीत पाया. लैम्पार्ड. So I think, don't you think Vinicius Junior will leave the club if Mbappe joins Madrid? And go to City? Hey, Mohan बोल सकता है. Doku on one side and Junior on other side. Grealish का क्या होगा भाई? Wow. I think superb. It's half time. Because why I said he might why I said Vinicius might leave is because of that racism row that there was with those fans. So that might play on his head. So he might. I think the racism is in some in zealot in La Liga nowadays. Racism is at its peak in La Liga. बहुत सारे लोग complaints नहीं करते. मैं बार्सिलोना के ग्रुप खोलता हूँ sometimes. यार मैं देखता हूँ मैं ट्रांसलेट करके देखता हूँ. I think टेलीग्राम में बोलो, Reddit पे बोलो. Racism is at its peak in La Liga. You can't deny it. यमाल को रेसिज्म मिलता है लेकिन वो फोकस नहीं करता. विनीशियस क्या करता है? इज लिटिल बिट अ ड्रामेटिक फेलो. वो चाहता है कि टीआरपीज ऐसे बटे, वो चाहता है कि थोड़ा सा पीछे ऐसे हो. यमाल को मिलता है रेसिस्ट कमेंट्स. रेडिट के ग्रुप में मैं देखता रहता हूँ. तो रेसिज्म इज एट इट्स पीक इन ला लीगा यार. मुझे पता नहीं स्पेनिश स्पेन में क्या हो रहा है. बाय द वे फतेह भाई, I read the novel. Saka off injured it seems.
There's a big news coming from the Arsenal इतना game. मैचेस हो रहा है ना. नहीं, Nice. आर्सेनल ने लेंस ने इक्वलाइज कर लिया. It's 1-1. आरके लेंस 1, आर्सेनल 1. And the big news is I think Saka is having a thigh. It's not good for a player to be injured. It's not I'm excited or something, but it's just a big news because बट City इट्स are अ playing मिस्टेक ऑफ in मिकेल next. आर्टेटा. लाइक मैं उस दिन मैच देख रहा था आर्सेनल का और मैं सोच रहा था भाई क्या कर रहा है तू. 53 मिनट्स हो गए. यू आर 3-0 up against Bournemouth and you're not taking the player off. You are keeping him on the pitch, a player that's already hobbling. उसकी नी पे पैड्स लगे हुए हैं. तो आई थिंक मिकेल आर्टेटा हैज टू टेक अ बिग ब्लेम फॉर दिस. बट अब मैं थोड़ा आना चाहता हूँ इंटर पे भी, फतेह भाई, क्योंकि इंटर का भी बेनिफिका के साथ चल रहा है. अभी तक आपको क्या लगता है इंटर कैसा खेल रही है और इंटर का सीजन आपके हिसाब से लाइक हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इंटर दिस सीजन? See, I think everything was going good till that home defeat to Sassuolo. We were so good in the first half. And then there's this something that Simone Inzaghi does at halftime, where the energy goes down. The second half, the players came out, there was no energy. And Sassuolo, like they're the bogey team. That guy Berardi, he likes scoring against the big teams. And that's a winger that I thought was going to move. So, when clubs talk about taking a winger, I think Berardi is the one in along with Kvaratskhelia who needs to be spoken about more. So I was very disappointed in that game. Abhi, I think it's Benfica dominating possession, Inter playing on the counter. So it's not looking all that great, But we better avoid a defeat. I mean, because Sociedad looked very good in their first game. We've got 2 games against Salzburg, so even a draw today and then 2 wins over them, I think we'll be okay. But हारना नहीं. अगर हार गए तो then Conte vibes. And what about the link-up play of Benfica, Di Maria, and I think Silva, Neres? What do you want to comment Yeah. about it? I haven't kept itna zara nahi because I've been too interested in what you guys are saying. So I haven't seen enough. But I don't think they've had any clear-cut chances, have they? I don't think so. कोई खास chances नहीं हुए हैं. ठीक है, they're playing well. They're holding the ball very well, Benfica. But I don't think they've created any great By the way, chances. So Fateh Bhai, that day I was researching about a tactical analysis of 3-5-2. उसमें मुझे शो करना होता था, तो मैंने शो Okay. कर भी लिया. ओके, तो मैंने देखा आज भी आई थिंक इंटर इज यूजिंग 3-5-2, जो मुझे पता भी था. एंड यू गाइस आर यूजिंग थुरम एंड आई थिंक लॉटारो मार्टिनेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने अभी खोला. एंड यू आर यूजिंग 5 इन द मिडफील्ड. तो तुम्हें ये नहीं लगता कि ये 3-5-2 डजंट वर्क इन सेरिया और ऐसे टीम के लिए? बाय द वे, सोमर खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है इंटर में जाके, वो वन ऑफ माय फेवरेट गोलकीपर. तो तुम्हें ये नहीं लगता कि ये 3-5-2 सिर्फ ला लीगा टीम्स अच्छे खेल सकते हैं? no, I don't think so, Anurag, because historically Italians they love 3-5-2. Conte जो है as a I coach, just wanted this from you. I just wanted this from because you. when I started watching football, Conte was playing in a 3-5-2 for Capello, for Lippi, and all those coaches in the 90s. उधर तब 2 formations होता रहा, 4-4-2 or 3-5-2. So a lot of Italians, they grew up. These coaches, Simone Inzaghi, Antonio Conte, ये खुद खेलते थे 3-5-2 में, and that is why they brought it with them now as coaches. So I don't think, and I want to say, because under Conte in Europe we went nowhere. So I want to say that 3-5-2 doesn't work, but then last year it worked. And last year even in the final it seemed like it was working. Finals. You outnumbered the box midfield with the 3-5-2 thing, and Pep Guardiola. That's why in 3-5-2 we were dominated. against I thought Inter would win. It was just a Rodri strike. Yeah. against 3-5-2, you have to have a DMF who is a long range banger. जो long range मैं उस दिन भी stream पे बोला मैंने, against a 3-5-2 sometimes they were like this too. Rodri ने long range banger मारा. Rodri वही काम कर रहा है जैसे रोमियो बार्सिलोना पे कर रहा है. Though difference in class, but I think against 3-5-2 you need a proper anchor man or a proper मतलब क्या बोलूं, a proper anchor man जो कि long range banger मार सकता है. और वही हुआ. Anurag Bhai, I was just thinking about this. Apart from a long range banger, I think there was another solution to break a 3-5-2. That's why Pep got Kovacic in. It's if you have a midfielder who can take on players and then break that 1-to-1 marking system in the midfield and go past 1 or 2 midfielders, then it opens the entire system up. I think that is why Pep bought your Kovacic, Matheus Nunes, and all of those people who are strong in that. So I think those are the only 2 ways in which you. हम क्या कर रहे हैं? We are playing फतेह भैया. हम क्या कर रहे हैं? 3-5-2 है. Sometimes हमने क्या किया? हमने उसको चेंज करके किया 3-2-5. ओके. Q3 फ्रैंकी डियोंग, जब हमें जरूरत पड़ता है फ्रैंकी डियोंग का, हम उसको मिडफील्ड पे ला रहे हैं. और जब हमें जरूरत पड़ रही है उसको डिफेंडर बनाने का, हमने फ्रैंकी डियोंग को पीछे भेज के आफ्टर 80 मिनट्स we are creating 3-5-2. It's very easy. Xavi ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया.
Okay. अरे बायर्न ने 2 गोल मार दिया किसने? अरे सॉरी No, Bayern is drawing 0-0 with FC Copenhagen. हाँ, Which is- nil-nil है, Bayern nil, Copenhagen आ nil. गया That too at home, right? Bayern is at home, right? If I'm not wrong. नहीं, अवे है, कोपेनहेगन के Away home पे है. No, Copenhagen And I were think 2-0 उनका up तो against बहुत Galatasaray struggle till the चल रहा है. 85th minute. But Copenhagen were 2-0 up against Galatasaray till the 85th minute. So we should not sleep on them. मतलब अगर वो आज point ले लेते हैं Bayern से, तो we might even see Bayern and Copenhagen going through. And the best thing about Copenhagen is their defense. what I want is my prediction gets right, boss. Strikers who can go on the counter. The strikers are fast and physical. So, Fateh Bhai, just a thing on PSG. What do you think about PSG this time? Because I think the team is balanced, actually, very balanced. Yeah, I think because on PSG and Warren Zaire-Emery. Your opinion on both? So I think firstly on PSG, they've done away with the habit of having so many big stars. Everybody's going to work for Mbappe, and I think that will work for them. And Luis Enrique, his Euro team, that Spanish team that we played, Italy played in the semifinals. It was such a good team. I mean, all these young players from Barcelona, and like suddenly in the Euros they were doing so well. So these Pedris and uske pehle we didn't really know whether they were the real deals. But so I trust Luis Enrique, and I think the fact that they only have one focal point in their team now, that's Mbappe. There's no Messi. There's no who was the other one, Neymar, or there's nobody to sort of create that dressing room problems. So I think they'll do well. I mean, along with Man City, I think they are the real favorites this time because I don't think Bayern are that strong. I mean, they're not looking good. If they Bayern can't defense yeah. Especially Upamecano, why is he starting? So I think PSG will do very well. What's the other team? मतलब तुम Upamecano को कितना Warren देख रहे हो? Zaire-Emery. I want to give you on a player called Warren Zaire-Emery in PSG. He's just 18 years old, and they're comparing him to Jude Bellingham almost. My God, no, I think that's too premature. And will he get the chance? No, it's an interesting thing. Just a bit, it's an interesting thing because Pep Guardiola accepted a trade swap for Bernardo Silva and Warren Zaire-Emery last time. It has come from tier 1 sources related to City, but it didn't go through because Gundogan left and stuff fell through. So I think and he's holding the midfield on his own for PSG at 18 years. So there must be something over there. There must be something over there. And Luis Enrique is a coach who trusts youth. He already has that track record where he's not willing to he's willing to put young players in very big matches. So this is then then in that case I haven't seen any PSG games. But yeah, up to you. But, संजीव ने भी कमेंट किया कुछ. By the way, big up Arjun. And हाँ नहीं वो लिया था मैंने. And big up Sanjeev bhai, big up to Arjun bhai as well. Anurag अंदर से happily कर रहा है. I think overall वो तो understandable है, but I think अनुराग भाई ने ये भी कहा है कि he respects Real Madrid और जिस तरह Real Madrid खेल रही है. I respect that team a lot. I respect my La Liga teams a lot. Why not? Any day, anytime. By the way, before मैं फतेह भाई से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. I think अरे दिखाई नहीं दे रहे फतेह भाई. Basically, I just want to ask him a question, फतेह भाई. आप PSG को कितनी दूर तक देख पा रहे हो? I know that prediction नहीं चलता UCL में. ये कभी नहीं चलता. Draw का मतलब ये है वो है. लेकिन आप कितने दूर तक PSG को देख पा रहे हो? मेरे हिसाब से this season see Man City are the clear favorites. But उसके बाद जो है ना, I feel like Real Madrid are not as strong as we saw them, over the last 3-4 years. उतना strong नहीं है इस time. They don't have a forward. We're questioning their defense. Bayern Munich are not doing well currently. So currently, on current form, I would say after Man City, if there's one team that can go very far, it's PSG. And PSG are in the group of death. But I expect that they'll probably canter to the top spot. They'll finish top. Agreed. They are not going to drop points at all. And I think so. For now, it looks like that. But what happens in January? What happens in the transfer market? We don't know. So that is that is the big thing. Because I don't see generally ऐसे होता था. We used to say Man City, Liverpool. Liverpool are not in the Champions League. We don't know about Barcelona. Like you'll be able to tell us, Anurag. But what I also feel with Barcelona is it's too early. For that peak Barcelona right now. I mean, I think Barca will be in the quarters or semi-finals or something like that. But I don't think they'll win it. मतलब हाँ, ये तुमने मुझे बोला था. ये तुमने मुझे रात के 1 बजे बोला था. Yeah, it is too I remember early. it very well. 20 days ago.
yeah, it's it's something that it is a story that you will see over the next 2-3 years. That old Barca will be back, but abhi nahi hai. So मैंने जब देखा Yeah. मैंने जब देखा कि स्क्रीनियर है विद मार्क्विनोस, मैंने Yeah. बोला आई रेस माय केस. Yeah. स्क्रीनियर इज विद मार्क्विनोस, मैंने बोला And भाई Lucas Hernandez and Lucas Lucas नहीं, और Hernandez. पता क्या है, मैंने ये थ्री पंडित पे भी शो पे कहा था, स्पोर्ट्स वीक पे मैंने यही कहा था कि पीएसजी you want to डिफरेंट repeat it पीएसजी again है in front of me and Mohan. कि मैंने अरे यार मैंने यही चीज कही थी कि ये Again. पीएसजी लेस टॉक्सिक है डिफरेंट पीएसजी से. एनरिके अच्छी फुटबॉल खिलाने वाली है. The By the team way, is young. तुम बोलो, I think Fateh Bhai used to मतलब know me better than you guys. तुम बोलो फतेह भाई, मैंने और मोहन ने बोला I want from my heart कि पीएसजी हार जाए. वैसे Yeah, क्लब yeah. हारना Everybody नहीं चाहिए. wants. We won. मैंने नहीं बोला predict, Everybody आप wants. Yeah, even I You will say. not, you will not find anybody, amongst us panelists who will be like कि नहीं PSG जीते या ये वो. But then संजीव ना आई एम नॉट, मेरा पता क्या है, मैंने ये नहीं कहा कि पीएसजी जीतेगी, पर मैं सच बोलूंगा, अगर आई हैव टू से दिस बात, सबसे बड़ी बात, अगर हम पीएसजी के इतने पीछे जा रहे हैं मोरल में, आई थिंक अ लॉट ऑफ फुटबॉल क्लब्स आर नॉट लाइक मोरलिस्टिक. बायर्न म्यूनिख की जो रिपोर्ट्स आ रही है मैं इस पे बोलूंगा नहीं, बट आई एम अशेम्ड ऑफ बायर्न म्यूनिख एज वेल जो आ रही है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उस पे. साथ ही मैं ये कहूंगा पीएसजी का, मैंने ये कहा है कि दे आर अ गुड यंग टीम. मेरे को अब ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उनको देखने में, कि आई एम वेरी एक्साइटेड आपके यंग प्लेयर्स देखने में. जो पीएसजी के एनरिके की फुटबॉल है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स अब चले गए हैं जो टॉक्सिसिटी लाते थे. मैं देख रहा था मेसी, नेमार, एम्बापे वॉकिंग कर रहे हैं आराम से जैसे पार्क में आए हो. अब आप देख रहे हो कि साइड इज रियल एनर्जी, दे आर ब्रिंगिंग रियल एनर्जी. और इसलिए मैं संजीव से एग्री करता हूं, नो इट्स नॉट पीएसजी फॉर मी, इट्स इंटर मिलान. दे आर आल्सो डूइंग गुड. इंटर मिलान भी अच्छा कर रही है, और यूसीएल एक ऐसा कंपटीशन है जहां हम कुछ भी नहीं कह सकते. तभी यूसीएल का आपको ज्यादा आइडिया पता लगेगा राउंड ऑफ 16 के बाद. ड्रॉस क्या बनेगी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल. लास्ट ईयर आप देखिए किस तरह की एसी मिलान सेमीफाइनल पहुंची थी. उसके बाद इंटर मिलान मेरे ख्याल से लुकाकू का मिस, they were 1 inches away from reaching the penalty. Sorry Fateh Bhai, but I think Lukaku is a god for Mohan. Mohan was an atheist, I think. But after he saw Yes, Lukaku yes. that day, When United and City played a derby, also Lukaku scored a own goal for us playing Oh for my United. He always rescues us. हाँ लकाका. But मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई उस दिन वो भाई मैंने देखा लुकाकू का भाई वो सेव. I think he saved City. I think City should. By the Yeah, way, because at that moment, if Inter would have scored at the end, momentum सारा उनके साथ था. Momentum. They would have just Yeah. taken the cup. Momentum is so important. by the way, I was a huge fan of Inzaghi, Fateh Bhai. I was a huge Yeah, fan yeah. of Inzaghi in my childhood days. I was a huge fan of Inzaghi. But the other Inzaghi, not this one. इसको तो किसी I have seen him play for Lazio, but then I don't think that is the other brother, the AC Milan wala. Other brother. Yeah. Other brother. Yeah, he was a very good forward, very intelligent. Yeah. Very intelligent. मैं ये कहूंगा जैसे हाफ टाइम शुरू होने में टाइम पड़ा है, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हु विल विन यूसीएल. जैसे संजीव भाई कह रहे हैं बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 चले जाओ, वहीं काफी है. By the way, I just want to add something about Barcelona. थोड़ा सा स्क्रीन को ये कर दो. मैं I just want to add कुछ something. करिए, आई डू इट. मैं ये फतेह भाई को बोलना चाहता हूँ क्योंकि फतेह भाई विक्टर रोक आने वाला है, उसका एक बैलन डॉर क्लॉज भी है जैन में, ठीक है. बट मैं फिर भी कहूंगा वी नीड अ वेरी गुड स्ट्राइकर. अगर लेवांडोव्स्की का फॉर्म वापस नहीं आता, मोर देन चेल्सी वी नीड अ 6'2" स्ट्राइकर. एंड बार्सिलोना के बारे में मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ. आई थिंक दिस टीम इज अ वेरी अंडररेटेड टीम. बस बार्सिलोना का पिछले 3-4 साल का परफॉर्मेंस देख के हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि यार ये टीम कुछ नहीं कर पाएगा. बट आई थिंक दिस टीम कैन ऑल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक. राउंड ऑफ 16 नहीं, उससे आगे ही जाएगा. लेकिन हाँ, यूसीएल जीतेगा कि नहीं जीतेगा भाई मैं तो नहीं बोलूंगा, ये कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स तो अभी भी है. कुछ अभी भी टैक्टिकली प्रॉब्लम नहीं, प्लेयर्स पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है. बट आई थिंक फेलिक्स का एंट्री मारना बार्सिलोना में, आई थिंक मैं जो उस दिन मैं सब लोगों को बोला कि द लिंक अप प्ले ऑफ बाल्डे एंड फेलिक्स का मतलब स्पेसेस पे घुस जाना, फेलिक्स का पास देना, एंड बार्सिलोना's 2-3-5 formation which can unlock Lewandowski's performance and which can also unlock Rafinha's performance. क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ गुंडोगन क्या कर रहा है, जो मैं मोहन को बोल रहा हूँ थैंक यू यार मोहन, थैंक यू फॉर गिविंग अस गुंडोगन. क्यों? आपको पता है फतेह भाई व्हाट गुंडोगन इज डूइंग? गुंडोगन हर एक टीम का लेफ्ट बैक को गुंडोगन जाके पॉइंट कर रहा है. तो लेफ्ट बैक का कंसंट्रेशन गुंडोगन पे चले जा रहा है, एंड इसका फायदा रफीना ले रहा है. रफीना इज एंटरिंग इनटू द हाफ स्पेसेस एंड क्रिएटिंग गोल्स एंड क्रिएटिंग लॉन्ग रेंज बैंगर्स. और वहां से फेलिक्स और बाल्डे वैसे ही हाफ स्पेसेस में घुस के गोल मार रहा है.
सो ये बहुत अच्छी बात है एंड आवर डिफेंस इज वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है 2-3-5 पे। तो आई थिंक यूसीएल में जावी को 3-2-5 फॉर्मेशन पे खेलना चाहिए। आई थिंक दैट कैन हेल्प बार्सिलोना लॉट। एंड टैक्टिकली मैं अगर बोलूं तो बार्सिलोना मुझे लगता है इस साल जा सकता है, बहुत दूर तक मैं बार्सिलोना को देख सकता हूँ इस साल। मैंने कभी नहीं बोला, आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस तो देगा ही। नहीं, फेयर इनफ। आई थिंक बारसा की साइड भी जिस तरह मैंने परफॉर्मेंस देखी, आई थिंक दे आर प्लेइंग रियली रियली वेल। लक ऑफ द ड्रॉ तो चलते ही, if they play Manchester City earlier. I think Fateh Bhai will agree with me. Lewandowski को छोड़ के we don't have any big stars. Gundogan is a big star, of course. लेकिन वैसा मतलब वैसे तो एम्बापे भी पीएसजी पे बहुत big star है। Cancelo is one of the stars in terms of right backs. Is one of the best top What 5 right backs. the matter with Cancelo is improving himself under Xavi as a 1v1 player. वो 1v1 के against पे बहुत अच्छा खेल। But I still think Cancelo's 1v1 defending. I mean, I would like to see him against अचानक से fast अच्छा हो रहा है। wingers. उल्टा जो लोग 1v1 अच्छा खेलते थे, जैसे कि फरान टोरेस 1v1 पे गोल मिस कर रहा है, मतलब बहुत ही मुझे लगता है आई थिंक कैंसेलो इज ट्राइंग टू इंप्रूव हिमसेल्फ अ लॉट। तो आई थिंक दिस बार्सिलोना's टीम इन 3.8 मिलियन, मुझे लग रहा है एंटवर्प से भी कम है इन लोगों का ट्रांसफर बजट, आई थिंक कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक। लेकिन भाई यूसीएल फाइनल विन सी उतना डिल्यूशनल तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन आई थिंक यार लंबी रेस का घोड़ा तो हो सकता है। Yeah, I think so. मतलब quarter finals तो I think Barcelona should be there and I think they'll win their group. Like tomorrow the game नहीं against संजीव, Monaco. मैंने बोला अगर लेवांडोस्की का परफॉर्मेंस बाहर ना आया तो मैंने बोला कि एक स्ट्राइकर तो चाहिए, और सिर्फ ये मैं ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्मेंस बार्सिलोना देगा। कि लेवा का परफॉर्मेंस तभी अनलॉक होगा जब हम लोगों का फ्रंट पे 5 जन रहेंगे, एंड ये तो सही बात है, जब फ्रंट पे 5 पीपल वर प्लेइंग इन द फ्रंट तभी लेवा का परफॉर्मेंस अनलॉक हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो मुझे पता नहीं, इट इज माय परसेप्शन। लेकिन मैंने जो हीट मैप्स भी देखा, जो मुझे सारांश ने भी हीट मैप्स दिखाया, आई थिंक एक और स्ट्राइकर अगर मिल जाए तो गलत क्या है इसमें। आई थिंक लेट्स सी विक्टर रो क्या करता है जनवरी में आके। एंड यहाँ पे मेरे बेटे को कोई यूसीएल खिलवा दो, उसका तो मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, बट अनुराग भाई आप लेना चाहोगे? मैं फतेह भाई को मैं क्या पूछूं? फतेह भाई को मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि ये पूछना तो नहीं चाहिए अबाउट यूसीएल, लेकिन मैं कुछ यही चीज बोलना चाहता हूं कि फतेह भाई आप ये बोलो टॉप 4 टीम्स ऑफ यूसीएल दिस टाइम। So I think City, PSG, Real Madrid, I will still put them there. And fourth, do you want me to put Barcelona or I'm confused between, like Arsenal? Bayern Yeah, Munich. I'm I very mean, confused. let us discuss the teams. Barca, Bayern Munich. I don't think Bayern are that good, low. But Tuchel is really struggling. Like maybe they'll become better, but I mean the Harry Kane factor, sure. So let's put Bayern there then. But I somehow, No, I'm just it's giving you not like magic alternatives. has not happened. Atletico de Madrid bhi hai. Oh yes, Atletico. Yeah, Anurag will tell us. Like how good is Atletico? Like this season, can they actually, playing very well. They are creating chances for Morata. The main impact is that Morata is not playing like a fox in the box. I am very much impressed कि पहली बार मैं उसको देख रहा हूँ कि लाइन के बाहर है, गोल मारा वैसे, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि वो बहुत दूर का खेल रहा है, ड्रॉप कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, and I am very much impressed that day by Griezmann's performance. What a performance by Antoine Griezmann. Really यार भाई कमाल खेल रहा है भाई, कमाल खेल रहा है। And also Arsenal could be an interesting one. I mean, I don't like Arsenal that much, but Arsenal could be an interesting team as well. Even I don't like Arsenal. तुम्हारा टॉप फेवरेट बोलो यार, तुम्हारा टॉप फेवरेट बोलो यार। मेरा तो सिटी ही है टॉप। ओके, मोहन भाई आपका? मेरा सिटी, रियल मैड्रिड, अब तो मैंने पीएसजी को देखा, आई थिंक आई हैव टू पुट देयर फोर्थ स्पॉट, एग्जैक्टली सेम फोर्थ स्पॉट, आई डोंट नो, आई मे बी विल पुट फोर्थ स्पॉट में आई वुड पुट एथलेटिको डी मैड्रिड इन द फोर्थ स्पॉट। मेरे लिए तो वही है, फॉर मी सिटी, एंड उसके बाद आई डोंट गिव अ डैम, क्योंकि मुझे सच्ची लगता है कि उसके बाद बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई थिंक बार्सा इज द बेस्ट। अगर दूसरों में मैं भी देखूं परफॉर्मेंस फुटबॉल बॉल में, बार्सा इज प्लेइंग द बेस्ट फुटबॉल, क्योंकि दूसरी टीमों में ना बीइंग वेरी ऑनेस्ट I think it's very like it could be Barca, Inter Milan also in the semi-final. Arsenal भी आ सकती है, Bayern भी आ सकती है. Anybody is anybody's play. But I think City is the best one. City का score जो है 2 defeats में I can go on laugh करना, but City is the best. हो जाते defeats, but Rodri भी injured है, हरी red card है, and I think they will be back. अनुराग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके top favorite क्या है before मैं चैस लूँ?
मैं ऐसा फैन हूं कि जब बार्सिलोना बहुत गंदा खेल रहा था मैंने मुंह पे बोल दिया था कि बार्सिलोना का कोई चांस ही नहीं है किसी भी मैंने जब जब यूसीएल नहीं खेल रहा था मैं तब बोला ला लीगा पे भी मैं लेट बी वेरी मच क्लियर मैं इस साल बोल रहा हूँ कि भाई हाँ मैन सिटी तो फर्स्ट होगा ही ऑफ कोर्स मैन सिटी मेरे लिए बहुत फर्स्ट पे रहेगा आई थिंक सेकंड इट विल बी आर्सेनल थर्ड बार्सिलोना एंड फोर्थ आई थिंक मैं इस साल रियल मैड्रिड को तो नहीं रखने वाला आई थिंक इट What विल about बी PSG? मैड्रिड जो मैंने ना PSG. पीएसजी को मैं नहीं रखूंगा नहीं नॉट पीएसजी एटलेटिको आई मैड्रिड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अनुराग विल भाई? नॉट पीएसजी But Fateh Bhai, you are telling Bayern is struggling, right? Was it not the same case with City last year? City were also struggling till that January sort of period, and they were struggling massively. Cancelo left, lot of things. Pep did not have a left back, no formation, and then he switched it up and City clicked. So I But think I in think we UCL, trusted. January, February, we'll What I think what we trusted was that we knew that it's a Pep team. It's City. They've been together for a long time. My question mark is on Tuchel because okay. is he really that good? That Champions League victory for Chelsea, is he really that good? That is my question. Like no, that year they were fantastic in the Champions League. Like the way they outsmarted Zidane's Real Madrid, but then Zidane also made an error. Where he went suddenly he Yeah, decided to play 3-5-2 at Stamford Bridge. हाँ. right. Yeah. So it was very weird. So I mean, we are looking at Tuchel. He's been at PSG. Okay, he's made a Champions League final. But this Bayern team, I mean, you guys played them. Man City played Yeah. Bayern Munich Yeah. last year, and they were very poor. And like Muller is old, Neuer is not there. We don't trust guys like Upamecano. I don't know about midfield. I don't know about the attitude of Mane and Gnabry and so I don't know. Sunny. I mean, yeah. I mean, I think they'll win the league. I think Harry Kane will ensure that they win the Bundesliga. Yeah. But I don't think in the Champions League they'll go that far. Last season it was interesting. They sacked Nagelsmann just before the City match because Exactly. Yeah. I thought if Nagelsmann was there, it would have been a much more difficult match for us because the tactical things, he was close to Pep Guardiola, it would have been a midfield battle and stuff. So ओ माय गॉड गाइस जस्ट व्हाट क्या हुआ भाई अबे भाई नहीं, स्क्रीन पे पेनल्टी देखो चेक है, पेनल्टी चेक हो रहा है. आई डोंट थिंक ओ टाइट वन है. I don't know. I think Tight this one. that will be very harsh, right? What can he do then? It's given. इट्स Penalty. गिवन Harsh, very That's harsh. such a stupid rule, right? Very What will harsh, you yeah. do in that case? What will Yeah. you do I in mean, that उसका case? वो हाथ कहाँ रखेगा? हाँ, I think कहाँ जाए? This I is think one वो of the miss करेगा. crash. If Politano takes it, he'll miss it. I'm pretty certain. मैं Politano मोहन भाई is, आंसर देना चाहूंगा. Osimhen How ने- many goals Haaland scored in recent matches without KDB, Grealish, Bernardo Silva? Haaland की बड़ी गेम्स में परफॉर्मेंस नहीं आ रही मोहन भाई. लाइक जब मेन चाहिए मैनचेस्टर सिटी को, तो मोहन नहीं, आपको लगता है संजीव. कि थोड़ा सा हालैंड को थोड़ी गेम अपनी और इंप्रूव करनी पड़ेगी? संजीव क्या बोल रहा है मैं जो चैट देख रहा हूँ संजीव बोल रहा है कि बार्सिलोना डोंट नीड अ स्ट्राइकर संजीव ये बोल रहा है उसका परसेप्शन ये है Haaland is still the top scorer. Haaland is still the top scorer in the Premier I think League. Osimhen He's will on take the 7 to 8 penalty. goals. नहीं, क्वारा है. आई थिंक सो. नहीं, क्वारा भी नहीं है. आई थिंक इट्स कौन है? आई एम इन लव विद क्वारा नहीं, क्वारा नहीं है. आई एम इन love with this guy And कोई Kvara और is in है. love with Real Madrid. This love triangle will not work, Anurag Bhai. ओसिमन क्यों नहीं ले रहा पेनल्टी? कौन लेगा पॉलिटानो कौन ले रहा है आई थिंक केपा Kepa is रिडेम्पशन a very good penalty stopper. Kepa is a very, very good penalty stopper. अरे डोंट गिव मी एंजाइटी एंड फतेह भाई डोंट गिव मी बच गया, बच गया. Poor penalty. अरे हो तो गया. हाँ. Yeah, but Kepa is a that very good was penalty never a stopper. यार. handball, right? That is such a shit rule. You and I in this beautiful world. Green skies, Anurag called blue it though. lines. He said that. But I also said that I would like a draw. Like if it ends like this. अनुराग भाई, लाइक संजीव भाई बाबा ये पूछ रहे स्ट्राइकर का, एंड लेवेंडोस्की इज द आल्सो टॉप स्कोरर इन ला लीगा. तो इस पे आपको क्या लगता है अनुराग भाई, लाइक लेवेंडोस्की पे? Sanjeev is someone who is very much close to me. This is the first thing. And संजीव जो बोल रहा है मैं उसको रेस्पेक्ट करूंगा तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा लेकिन मैं जितने टैक्टिकल एनालिस्ट के साथ मैं कांटेक्ट पे हूं क्योंकि द थिंग इज दिस नॉर्मल पीपल मींस मैं खुद को कुछ नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं क्या करता हूं मैं तो बहुत सारे जैसे कोच रिस आई एम इन कांटेक्ट विद हिम एंड बहुत सारे ऐसे टैक्टिकल एनालिस्ट हैं जिनके 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 साथ मैं बात करता हूं एंड विद आल्सो आई थिंक जी बाबा से भी
आई थिंक नहीं, मुझे कोच रीस ने ही बताया, एंड ऑल्सो मैं अगर सारांश के बारे में भी बोलूं, उसने हीट मैप्स चेक किए, क्योंकि लेवेंडोस्की का परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं चल रहा है, लेकिन जो संजीव बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, कि आई थिंक संजीव जो बोला कि थोड़ा सा लेवा ड्रॉप कर रहा है एंड क्रिएटिंग चांसेस वगैरह वगैरह, लेकिन टू मी भाई ये यूसीएल है एंड इट्स अबाउट विनिंग यूसीएल, तो मैं बोलूं कि स्टिल बार्सिलोना नीड्स अ टॉल स्ट्राइकर, मैं अभी भी बोलूं, अभी भी मैं अपने आप पे स्टिक करूंगा, लेकिन संजीव जो बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लेवांडोस्की, मैं अगर बोला तो गलत बोला, लेवांडोस्की के टैलेंट पे कोई डाउट नहीं कर रहे भाई, वो ही इज लेवांडोस्की, वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्राइकर्स भाई, उसके बारे में मैं क्या बोलूं, मैं कौन होता हूं, लेकिन आई थिंक स्टिल मैं बोलूंगा बार्सिलोना नीड्स अनदर आई एम जस्ट अनदर, मैं बोल रहा हूं अनदर Guys, स्ट्राइकर. Copenhagen is beating Bayern Munich. Oh, By the way, lead against Bayern Munich. again. Oh my god. जिस Oh टीम my ने god. भाई जिस टीम ने गलाटासारे को रोक के रखा, गलाटासारे बहुत गंदा टीम नहीं है भाई. Come No, on, just यार. imagine Copenhagen would have won against Galatasaray and they would have beaten This is UCL. Bayern Munich as well. That would have been. You can fact अगर ये रिजल्ट रहा, I think Bayern is going to sack संजीव क्या लिख रहा है? संजीव क्या लिख रहा है? बरसा paid referees for that penalty also. हाँ ये I think that's why I love संजीव. आशीष का चैट भी ले लो, आशीष लिख रहा है 2-2. By the way, आज पोएटिक स्किल्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं ये शो, बट दे आर कमिंग टू आवर चैनल ना. वेरी गुड. नहीं, वेरी गुड, थैंक यू यार. और मैं अब एक चैट लेना चाहता था, संजीव भाई ने भेजी थी, आई थिंक रिगार्डिंग नैपोली. हाँ, who is this Napoli coach? He is holding his team, not doing great things. He even don't deserve to manage Dinamo Kiev. मैं इसमें फतेह भाई से पूछना चाहूंगा, फिर अनुराग भाई, फिर मोहन भाई, आपको क्या लगता है? आई थिंक अंडरवेलमिंग अपॉइंटमेंट थी रूडी गार्सिया. आपको क्या I लगता है think फतेह so, भाई इसमें? but you know, formation wise, play style wise, he's closest to Spalletti. He already replaced Spalletti at Roma, and oh my God, Napoli almost scored the third. Oof, you guys need to see this. I'm sorry for the spoilers, but so you know, I think ऐसा स्पॉइलर दो, नापोली स्कोर कर रहा है, ऐसा स्पॉइलर दो तो मुझे अच्छा लग रहा है. It helps him increasing my serotonin basically. तो ये yeah, so बहुत I अच्छा think स्पॉइलर Rudy है. Garcia underwhelming, yes, but then he had already replaced. खत्म कर दो यार, खत्म कर दो मैच आज. No, I think this is a very good result for Napoli. They should Kepa, yeah. And also, I think Inter Milan hit the post, so it's you know all happening right now. तो एक पोल पे Man पिक किया United है. Galatasaray, what is the score there? I think 1-1. Man United 1, Galatasaray 1. मुझे तो पता है मोहन भाई इज वेटिंग फॉर आर्सेनल यूनाइटेड स्ट्रीम के एंड में, तो मुझे पता है मोहन भाई की आंख सिर्फ आर्सेनल यूनाइटेड पे है. मोहन का दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है. वो अगर दिल से बोल सकता है कि अर्सेनल बहुत गलोच टीम है, गंदी खेल रहा है, लेकिन वो टैक्टिकली बहुत एक्सपर्ट है. वो जानता है कि अर्सेनल कोई फेंकने वाला टीम नहीं है. मैं भी मुंह से मैड्रिड के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट आई थिंक दिस इज आई थिंक फतेह भाई विल एग्री विथ मी. संजीव ने मैड्रिड को रखा एज वन ऑफ द, मैं जिंक्स कर रहा है कि मुझे पता नहीं. आई थिंक मैं ला लीगा इतने सालों से देख रहा हूँ. आई थिंक दिस इज द मोस्ट वीकेस्ट मैड्रिड आई एम एवर वाचिंग नाउ. ये अंदर से खोखला है, ये अंदर से खोखला है. मैं वो तो मैं भी एग्री करता हूं आपसे, क्योंकि अब देखिए ना, बेंजेमा भी नहीं है उनके पास, कोटुआ भी नहीं है अभी, तो आई थिंक जब हमें स्ट्राइकर ही नहीं है बेंजेमा, मेरे को चेल्सी वाला मैच भी याद आता है. वी लाइक सच्ची वी डिस्ट्रॉयड देम इन 2 legs, बट बेंजेमा, विनी जूनियर, दे वर देयर लाइक टू गेट रियल मैड्रिड अवे. और स्ट्राइकर, दे नीड अ स्ट्राइकर. आई थिंक अगर ओसिमेन को देखेंगे या फ्यूचर में 2-3 साल बाद हालैंड को देखेंगे, रियल मैड्रिड नीड अ स्ट्राइकर. और ये चीज रियल मैड्रिड को देखनी पड़ेगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जोसेलू इज नॉट द सॉल्यूशन. योशेलू पे तुम 1-2-3 मैच पे अच्छा खेल सकता है भाई, लेकिन तुम हर मैच के लिए यार योशेलू करोगे तो ये तो ठीक नहीं. अगर विक्टर रोक लेवांडोस्की नहीं रहेगा. Sorry for interruption. Man United lead 2-1 Galatasaray. This group is turning around on its side. Bayern losing, wow, and United lost to Bayern last time. This group is something else. अरे रात अभी जवा है. 58 minutes have already passed in the match. भाई बहुत आने वाला है. 6-7 minutes तो और हो गए ना. एंड मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. उन लोगों को उस बंदे को किसने बोला था सस्ता हालैंड? किसने बोला था भाई? किसने बोला था भाई? Yeah, a lot of people are saying. Fateh Bhai, Thuram has been a very good signing. Like Chelsea को इसके पीछे थी. He has been a very good signing as a free agent.
But so Man U lead, and I think Atlanta selling Højbjerg after just one season. I think that is why a lot of people, because nobody took notice of Atlanta last season. But in us, Hmm. in Serie A, everybody who used to see Atlanta, everybody was like, "Wow!" I mean, they have a player who's going to be big. Yes. Oh, अनुराग भाई संजीव भाई तो कुछ अलग ही लिख रहे हैं, बायर्न वर्सेस बारसा राउंड ऑफ 16 नहीं चाहिए फिर से. I think Hoyland in the this thing was good But for इस Barca बार तो इस देगी बार ना आएंगे बायर्न तो को. देख लेंगे, इस बार आएंगे तो देख लेंगे. हाँ, See, इस this बार is बारसा not छोड़ about देगी. Arturo Vidal. ये Arturo Vidal वाला टीम नहीं है भाई. वो संजीव लिख रहा है, और अभी सॉरी यार. गैलर रेसी को कौन डाउन कर रहे हैं? अगर बायर्न ऐसे खेलेगी, गैलर रेसी कैन इवन बीट देम. अगर कोपेनहेगन से स्ट्रगल कर रही है, गैलर रेसी कैन बीट बायर्न. गलाटा सारे ह्यूमन. अरे यार, मैंने तो प्रेडिक्ट किया था गलाटा सारे जीतेगा भाई. सिर्फ मार्टेंस नहीं है, जीएच नहीं है, उन लोगों का टीम देखो गलाटा सारे का यार. But the thing with Copenhagen is Galatasaray were also struggling अनुराग against अगर आपने जीत Copenhagen. जाए तो सीटी मारना Copenhagen है. should have beaten Galatasaray at home. They were leading 2-0 after that red card happened and stuff. So I think a shocking what a result. story it would be if Copenhagen qualify for the next round. That would be the story of. I'll be very much happy, man. नहीं, गोल डिसअलाउड है. यूनाइटेड का गोल डिसअलाउ हो गया. 1-1 है. गोल नहीं काउंट हुआ. फतेह भाई. Oh my and God. Sanjeev just said about Thuram, and Thuram has scored for Inter. So संजीव fantastic. is संजीव संजीव इज एपोकलिप्स मैन. वो जो बोलता है वही होता है, भाई. Yeah. संजीव को नहीं मियां जानते. फैन जिंक्स मियां. करके तुम्हें प्रिटेंड कर करके बिलीव करवाएगा कि बार्सिलोना हार जाएगा. फिर देखना मैड्रिड चैनल्स पे जाके वो क्या करता है. ही इज वेरी मच फेमस फॉर डूइंग दिस. संजीव इज एल कैपोन ऑफ फुटबॉल कम्युनिटी बेसिकली. Oh गैंगस्टर. my God. What a high praise. किसी को Al Capone बुलाना is high Of praise. course. Have you seen the? अरे ये तो चिल स्ट्रीम हो रहा है ना. So have you आपने देखा वो फिल्म द अनटचेबल्स? क्या हुआ फिर से? ये कौन सा मूवी है? The Untouchables. अरे Untouchables. Yes. where Robert De Niro played the role of Al Capone. Yes. And I have one question. Like you guys, Anurag, you were saying कि Girona winning the. So abhi in your, like, everybody in Italy is also talking about De Zerbi and like Brighton and Hove Albion. So what do you three guys think? Like, is there a chance they can make top 4? I know they lost to Aston Villa, but can they make top 4? कौन? Brighton and over Hove Albion. Right. First thing is I think Roberto No De chance. Zerbi Top four, is पता है the क्या है? best coach in the Premier League tactically after Pep Guardiola. Pep Guardiola copied elements of that like best coach box after Pep midfield Guardiola. things from Roberto De De Zerbi. Zerbi, so that's a high praise. I think teams have realized how to play with Brighton. West Ham kept 18% possession, I think 2 weeks Yeah. back, and defeated Brighton 4-1. Yeah. They just sit back and hit on the counter. Aston Villa did the same. So it will be interesting how De Zerbi evolves. That will be the thing. नहीं, but if he मैंने reaches De Zerbi top मैं four. मोहन भाई आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. आई थिंक डिजर्बी को हम स्ट्रेट अवे बहुत ज्यादा बड़े पेडेस्टल पे डाल रहे हैं. देखिए, मैं आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम. ही इज मैनेजिंग रियली वेल, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट ही स्टिल हैज अ लॉट टू डू. ब्राइटन का मैंने यूरोपा लीग मैच भी देखा. दे कैन नॉट प्ले इन टू कॉम्पिटिशंस. दे लॉस्ट टू ए के ईथन्स. 2-3 मैच हारे. दे लॉस्ट 6-1 टू एस्टन विला. वो हमसे भी हारे. एंड ब्राइटन का टॉप 4 का कोई चांस नहीं है. उनके पास स्क्वाड डेप्थ है नहीं. दे हैव नॉट रिप्लेस काइसेडो. और What Mohan is saying is something different because मैं जर्बी के ऊपर अब रिसर्च कर रहा हूँ. जर्बी used to play with a nominal 4-2-3-1. 4-2-3-1 से क्या करता है जर्बी? डी जर्बी used to use this formation of 4-2-3-1. 4-2-3-1 से जब करोगे तो विंग अटैक एंड क्रॉसेस तुम रोक सकते हो. एंड बहुत अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर सकता है. आई थिंक डी जर्बी इज, इफ डी जर्बी इज एरिस्टोटल, Pep is Plato or something like this. I think right, De Zerbi is master of modern football tactics. I think Mohan want to say this. I think. आई एग्री. मैं एग्री कर रहा हूं, पर मुझे लगता है स्ट्रेट अवे लाइक पेप के बाद बेस्ट टैक्टिकल कोच प्रीमियर लीग में, जब प्रीमियर लीग में आपके पास और भी मैं कहूंगा बहुत अच्छे कोचेस है, तो वो अभी मेरे को लगता है ऊपर डालने वाली बात होगी जब अभी By the way, Mendy is coming and he's replacing Kamavinga. Unai Emery is very tactical. Unai Emery gets the job done big matches में. He gets the job done. Aston Villa को अभी Conference League में he has taken them, and League में they are only 5 wins and 2 losses. And even Mikel Arteta, I think Mikel Arteta को he is saying that De Zerbi is overhyped. The problem is this कि मोहन जो बोल रहा है कि De Zerbi is a master of tactics, संजीव क्यों बोल रहा है कि चेल्सी ने भी ब्राइटन के खिलाफ जीत लिया. एंड ब्राइटन अब क्या प्रॉब्लम होता है, ये मैंने कोच रीस से पूछा था कि भाई जो टैक्टिकल एनालिसिस पे काम करते हैं
उसको टैक्टिक्स अच्छा लगेगा, ठीक है। हम्म, जो और फैंस, जैसे मैं भी एक फैन हूं, तो यार अगर जर्बी हार गया कोई भी मैच पे, तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स हारने पे है, तुम ये मैच हारे, वो मैच हारे, वो मैच हारे, हाँ फैंस विल नॉट सी कि तुम क्या टैक्टिकल एनालिसिस करते हो, क्या घंटा करते हो, Process. क्या उठा रहे, Process. बिकॉज टैक्टिक्स इज समथिंग एल्स। बट डी जर्बी को हाँ पेप फॉलो करता है। डोंट, मतलब पेप तो मेरा, हम लोगों का पेप है भाई, हम लोगों के दिल में पेप है, क्योंकि बट आई थिंक जर्बी को पेप बहुत 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 फॉलो करता है। आई थिंक जर्बी इज समथिंग एल्स। जैसे ग्राहम पॉटर, ही वाज क्रिएटिंग समथिंग एट Yeah, ब्राइटन। Graham Potter. Graham Potter was the Graham only Potter, manager what I've a seen in the performance last he showed 5 in years. Chelsea. But one more thing, Chelsea was not conceding goals in case of Potter, and till today उन लोगों के पास फिनिशर नहीं है। क्या नहीं चल रहा है, नहीं क्या मैं चल रहा है, क्या पॉटर चल यही रहा कहूंगा। है? Defense, but Napoli is on fire, man. This match is Napoli really is बस पॉटर में वही छोटी चीज कहूंगा कि पॉटर को अलाउ किया गया था ब्राइटन में फॉर 3 सीजंस इन अ रो कि 16th रैंक का हो। ही यूज्ड टू गो ऑन अ 13-14 मैच विनलेस स्ट्रीक। लाइक वो फ्रीडम जो उसको मिला ब्राइटन में वो कहीं और नहीं मिलेगा कि आशीष क्या 13-14 दिख रहा है, मैच चलो बिना। guys. हम्म। ये चीज है, आई रियली रिस्पेक्ट पॉटर। मैं चाहूंगा उसको अच्छा जॉब मिले बिकॉज आई लाइक हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। आई वाज रियली सैड कि वो सैक हुआ है, पर मुझे लगता है ही टुक अ रॉन्ग स्टेप कमिंग टू चेल्सी। कितना, आई थिंक फतेह भाई कितना लीग्स देखो, बुंदेसलीगा, सेरिया, ला लीगा। अब मुझे पसंद आता है टैक्टिकल एनालिसिस। तुम ईपीएल, क्योंकि ईपीएल इज नॉट अबाउट ग्लोरी एंड ग्लैमर। यू नो द डिफरेंस बिटवीन नेशनल अवार्ड विनिंग इंडस्ट्रीज एंड बॉलीवुड। ईपीएल इज ऑल अबाउट ग्लैमर एंड मच मोर Yeah. ग्लैमर। पेप ने जाके वहां पे टैक्टिकल एनालिसिस थोक दिया, जा वहां पे हाँ जाके एग्री। अभी अब वो कर रहा है, लेकिन इट्स अबाउट ग्लैमर। It's about Leonardo DiCaprio versus this Ravi Kishan or something else. Ravi Kishan जाएगा और Leonardo DiCaprio वहीं पर रहेगा. It's about glamour, man. हाँ लेकिन प्रीमियर मैं लीग इज ऑल अभी फॉर बोलूंगा ग्लैमर जावी क्योंकि अलोंसो। हाँ संजीव, जावी अलोंसो अच्छा है कि जावी अलोंसो का जो पिताजी है, जो पिताश्री थे, he was He was also a also manager. a He was manager. also a Yeah. manager. Yes, नहीं Shrey bhai, उसमें just पूरा ठीक touching है, on द प्रीमियर Shrey लीग By इज the bhai, ऑल way, फॉर just touching ग्लैमर। Mourinho can get sacked from Roma and Conte can replace him, I think. Mourinho. So हम But क्या I उसके think, मुझे लगता performance नहीं की रोमा वजह से सैक नहीं करेगी करेंगे। लाइक। Mourinho is a trash. अरे yeah, मॉरिनियो Mourinho's बहुत earlier, एम्बेडेड है रोमा फैन से। yeah. But then, if results don't improve, but I don't think Conte will take the Roma job because उधर पैसा नहीं है. मुझे भी नहीं So लगता। Conte will not. I think Conte will wait for some EPL team, maybe Newcastle, maybe, I don't know, maybe even come back What to is Chelsea, happening to हाँ have a Newcastle? good न्यूकासल run. विल टेक हिम फॉर द लाइक न्यूकासल का जो फिलॉसफी है ना, दे विल नॉट गो No, फॉर कॉन्टे। but if you want to win the league title, I mean, Chelsea might take him back. Your ownership has changed. I keep saying you have new owners. They have no links. The lady has left, and if Chelsea don't make top four this year, then I think they'll go for one. the lady I'm telling you. Mariana अगर ये हो Gravitsky or गया ना, something Yeah. was the name, right? अगर टॉड बोली Mariana ने काम कर Gravitsky. दिया ना, मैं रैंक बना के सीधा अमेरिका जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव हैड इनफ ऑफ टॉड बोली अभी जो ये कर रहा है। और अगर ये एंटोनियो कॉन्टे को लेके आया 20 साल के बच्चों को मैनेज करना डिसास्टर हो जाएगा। अगर 20 No, साल no, के 20 बच्चों को साल के मैनेज बच्चे करने के नहीं लिए होंगे कॉन्टे ले आया। then you'll get players like Darmian and whatnot. Zappa Costa. मैं Hey, पहले संजीव का मोटिवेशन comment लो, संजीव का chat लो। Shrey bhai, हाँ why not taking chats for this? You will find it very entertaining. देखो, La Liga फतेह is भाई। tactical, EPL is grammar, Serie A is physical, and Liga is overrated. मैं I ये know, कहूँगा EPL में I know हाँ the amount of pain संजीव is, जब फतेह भाई बोल रहे हैं ना क्या PSG after Man City, मुझे लगता है संजीव कुछ चैट नहीं किया, लेकिन संजीव का दिल टूट गया मुझे लगता है। नहीं संजीव डिड, मैंने दिखाया भी था, संजीव ने लिखा था PSG लाफिंग इमोजी। No, on पर वो current ये form we can talk about PSG. आगे जाके क्या होता है we don't know. But हाँ right now, I Yeah, think, but and to be in the group go of on, death, go on. it is going to be very interesting. Kal they play AC Milan, I think. No, Newcastle. ब्रोशर They और play एसी मिलान, न्यूकासल They play PSG, Newcastle tomorrow. They play Newcastle. Newcastle. PSG. Yeah. Oh सेंट my, जेम्स that is पार्क। I think Politano is getting replaced. Is it? yeah. हाँ आई थिंक Elmas. प्रेडिक्शन आ Elmas रही will come, I है। think. Just the score update, guys. Manchester United finally lead 2-1 against Oh my God. Galatasaray, and हॉलैंड then Bayern स्कोर, Munich have equalized against Copenhagen 1-1. हाँ मुसियाला। Uh, that is Okay. the group of death. I think that is the group वाओ of death. Copenhagen, Galatasaray, United, and Bayern. एक ही चीज चल रहा है वहां पे, मुसियाला, यहाँ पे बेलिंगहम, एक ही चीज चल रहा है इन बड़े बड़े टीम्सों पे, एक ही टीम चल रहा There was a है। rumor पर्सनल that Pep ब्रिलियंस। wants Musiala to replace Kevin De Bruyne at City next year. आई थिंक दिस, मैं बोलूंगा भाई, मैं दो चीजों पे मोहन से एग्री नहीं कर रहा था अभी पकुएटा के केस पे।
And Let's I ask think Fateh Bhai still, about Paqueta if he knows something. still the difference between Musiala and Kevin De Bruyne is the difference between Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. I think the ये difference है. That's class, man. Kevin De Bruyne is a class. He's a You god. can't replace him. Just like you You couldn't can't replace replace David him. Silva. The I same mean, way you City cannot haven't replace replaced David Busquets. Silva, right? City haven't replaced David Silva. City haven't replaced Aguero. I think Kevin De Bruyne is very irreplaceable. And my Haaland का जो performance हो रहा है, 60% is because of that man. Well, Kevin De Bruyne is a god. Kevin De Bruyne is something else. And comparing him with Odegaard and comparing him with Musiala, I think it's I think you can't compare him with Odegaard, Musiala, and you can't compare with him. I think he's something else, man. Kevin De Bruyne is something else. Yeah, but मैं बायर्न honestly, मैड्रिड को भी सपोर्ट कर लूंगा, बट सपने में भी कभी PSG को सपोर्ट नहीं करूंगा. I think because of PSG Ultras, the behavior they have shown for their own legends, I think they don't know how to run a club. Don't take me otherwise. But I'm happy for I agree. the way they're performing, and I'm happy for the team they just build up. अब मुझे लगता है कि भाई बड़े मैचेस पे इस टीम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पे कुछ, लेकिन बस जब से मैंने स्क्रीनियर को देखा, बहुत अच्छा मैच चल रहा है यार. जब से मैंने स्क्रीनियर और मर्कुरियस को एक साथ देखा, मेरा तो दिल धड़क गया भाई. फिर तो मैं क्या बोलूंगा. But I think फतेह भाई ने जो Bellingham is performing, Musiala is performing, and where is the golden boy Pedri? संजीव भाई. नहीं, मैंने पेड्री का नाम बोला. आई थिंक तू टाइम स्टैम्प देख के बोल लेगा, लेकिन मैं केविन डी ब्रुयने के बारे में बोल रहा हूँ. तो केविन डी ब्रुयने से ओडेगार्ड को कंपैरिजन करते हैं आर्सेनल फैंस, एंड केविन डी ब्रुयने से थोड़ा सा मूसियाला को भी बायर्न म्यूनिख फैंस कंपेयर कर रहे हैं. सो आई एम जस्ट टेकिंग माय सेल्फ इनटू ओडेगार्ड एंड मूसियाला बिकॉज़ ऑफ Galatasaray equalized 2-2. Who scored? Icardi. Galatasaray गोल मारा है मोहम्मद केरम. I cannot pronounce it. oh wow! Koglu. And Lenser leading against Arsenal 2-1. Lenser Oh leading my against God. Arsenal 2-1. Oh my god, this UCL night is killing me. Oh my god, and now it's time for Napoli. Yes, Napoli, just Napoli. I need one goal, man, for Napoli. It is shocking. This is UCL. You guys are predicting it. This is UCL. You guys are predicting it. This is UCL, man. This is the beauty of UCL, basically. Oh my Wow. god. Yeah, I think it's यार मेरे को लगता है बेकार मैच चूज कर लिया. Oh my god. आर्सेनल आपके लेंस से हार रही है. Oh my god. And नहीं, Sevilla is बेकार मैच winning तुमने against चूज नहीं किया. PSG. तुम अभी 10 मिनट बाद समझोगे क्यों बेकार मैच तुमने चूज नहीं किया. ये तुम 10 मिनट बाद समझ जाओगे. The speciality of this match, you are getting Serie A audiences as well as La Liga audiences. Just wait and see, क्योंकि वो मैचेस में कुछ भी हो सकता है. Yeah. I think it's a corner and will be taken by Modric. Guys, 72 minutes have already passed in the match. It's Napoli 2, Madrid 2. Oh sorry, it's not my channel ना. क्या बोल रहा हूँ मैं यार, मैं भी भूल गया. नहीं, कोई बात नहीं, आपका खुद का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबका एक चैनल है. हाँ, of course यार, हम लोगों का ही चैनल है. Anurag Bhai, you didn't get my sarcasm. Now I want Porto to win against Barca and Newcastle to sarcasm. This is nothing new for me. Sanjeev is just like this. This is nothing new for me, so I am not laughing. And if Porto will take Barca, the one man who will give a nice drive or a chalang from his roof, that is Sanjeev. If Porto wins against Barca in any way. By the way, guys, UCL nights पे अकेले मैच देखने का मजा नहीं. अब फतेह भाई को क्या बोल रहा था, फर्स्ट हाफ पे मैं रहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं स्ट्रीम छोड़ के तो मैं मैच ही देखने वाला हूँ ना. मजा नहीं लगता अकेले बैठ के. क्या हुआ यार, गोल मार दिया मैड्रिड ने. फतेह भाई प्लीज यार, डोंट टेल मी. Don't tell. Oh, nice save. Nice save यार. Nice save. This Bellingham is becoming very, very dangerous. But you know one thing, कुछ टीम्स के अगेंस्ट पे बेलिंगम काम नहीं करेगा. क्यों, मैं मैच के बाद टेक्निकली समझा दूंगा. आई थिंक ज़ेलेन्स्की विल बी गेटिंग रिप्लेस्ड बाय रास्पाडोरी. आई थिंक ज़ेलेन्स्की को आई डोंट थिंक लाना चाहिए था बाहर. आई थिंक ही शुड हैव बीन केप्ट ऑन. मुझे लगता है ये गलत डिसीजन हो गया यार. Just like taking Bonucci out again Union Berlin against Madrid. मतलब मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, लाइक हाँ सरप्राइज रिजल्ट हो रही है,
But अगर मैं stable team I think देखूंगा Yopolo bowling will be अभी, coming and Rodrigo will be getting replaced. I think, guys, it's a good thing for Napoli now. I think it's a good thing for Napoli. Rodrigo will be getting replaced by Yoshelu. See, this is the mistakes Ancelotti is doing. आज अगर मैच जीत भी जाए, ये मैनेजर ये कोई बड़े टीम्स के अगेंस्ट ऐसा नहीं कर, मतलब बार्सिलोना होता. By the way, फतेह भाई, you are my rival. फिर भी मैंने आपका टीम एंड प्लेयर को कैसे प्रेज किया. फोर्जा मिलाना. Thank पर you पता है so भाई, मैं much. आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इंटर मिलान में कहूंगा, इंटर एंड बारसा टॉप टीम्स में सबसे स्टेबल अभी ये टीमें लग रही है जो चैंपियंस में भी अच्छा कर रही है, लीग में भी अच्छा कर रही है. आपका इंटर पे क्या मतलब ओपिनियन है कि आपको लगता है इंटर इस बार अगेन कैन रीच एटलीस्ट सेमीफाइनल? I think it's going to be very difficult because too वहां many से new कैमरा players थोड़ा have सॉफ्ट come in. करना पड़ेगा. बात You know, करो. too many new players have come in, Shrey, this time, like I think we've made 10 or 12 changes. तो अगर आप इतना ज़्यादा change कर दो ना एक टीम को, तो फिर आपको same वो करना बहुत मुश्किल होता है. I think in the league we may achieve something. In the Champions League, I'll be very happy if we get out of the group round of 16 भी जाए कोई, because there is that financially Inter Milan is still in, like, irrespective of last season, we are still in big trouble. So I feel like stable अभी लग रहा है start, because season start हुआ है. But देखो, like, look at the number of new players we have. We have 10 or 12 new players. So for them to gel, for them to have that same mentality, and I feel, for me personally, Brozovic, that is where we will lose things, because I thought Brozovic was the best midfielder in that Champions League final. Like, Hakan didn't do that well, but Brozovic, he is so good. And if you see Belgium versus Croatia also in the World Cup and all that, he manages to neutralize De Bruyne sometimes. Guys, like that guy has, मतलब उसका अलग level है. Brozovic, he's very underrated. So losing him, I feel like later on in the Champions League we will really struggle, because वो आदमी very special player. And so I feel like Italian teams this year जितना अच्छा last year किया था, उतना अच्छा शायद इस साल नहीं कर पाएंगे. Like, maybe we'll only have one team in the quarterfinals. Maybe it's going to be Inter. AC Milan ka group is so scary. Like, but having said that, I think Newcastle didn't look all that great against AC Milan in the first game. No. Like, they looked I think very, they were lucky. They were lucky to come out of very 0-0 lucky. draw. Yeah. So I mean, आप लोगों को लग रहा है Dortmund? I feel like Dortmund से नहीं होगा. I think PSG and Milan या PSG and Newcastle will go through from Newcastle that group. will. I think Newcastle, Newcastle yeah. will find it difficult. Newcastle will find it difficult. First time they're entering the European competition, they'll find it difficult. I think it's Yeah. Milan and PSG to go through. Fateh Just भाई की don't tell reaction से लग anything, रहा है Will. 3-2-3. It's corner for Real Madrid. Fateh भाई की So, reaction. Oh my god! Oh my god! Football heritage at its best. Oh my god! what happened? Oh my god! What deflection? Exactly when they were taking the kick, my data got off. Oh no, my Real have God. scored. What 3-2. what a goal! But I think the goalkeeper could Keeper have should have done done better. better. मुझे जितना लगता है. Yeah, है ना? हाँ, keeper should have done better for me. Like, वो बहुत पहले react कर गया. Yeah. वो deflect हुआ है. I think it's No, it deflected was from an actually a athlete here. deflection. I think he was on his Yeah. way to that side, and the deflection went over his. People, Anurag Bhai is coming. He's just gone, and big up Ashish Bhai was just looking around. And people have issues. I don't understand this point, right? So do elaborate on it. But Real Madrid got a third goal courtesy of Toni It's Kroos. heritage. Football heritage. Yeah, मतलब क्या goal था, deflected, when and Napoli when hearts have been City broken. Shrey, when City were going into second semi-final against Madrid, City were leading 4-3. A journalist wrote in the Athletic that to beat Real Madrid, you have to dig a pit, which is 7 feet deep, and you have to bury them inside and then cover it with a huge amount of My mud. God. That is what it takes to beat Real Madrid. Yeah. You have to finish them off. I think It's not Napoli just had their enough to kill chances. them. Like, Napoli के पास match में थी Osimhen का header. They had one or two chances जहाँ पे they could have got a third goal That's for what me. with Real Madrid, you have to finish them off. You Yeah. just can't give them a chance to wake up again. Anurag Bhai back with us. Anurag Bhai, आपने देखा third goal? Fateh Bhai, just a thing about Barella. I Yeah. thought Barella was one of the best in the Champions League final. He was a dynamo for you guys. He was Yeah, like yeah, everywhere. he is, he's full of running, but then I think he's still so young. I mean, he still needs to learn so much, especially when it comes to leadership and, controlling the whole game for 90 minutes. I think Barella is still a hothead. At times, he just
he lose his calm. That almost happened against Sociedad also. So I think it's, and by the way, Sociedad is doing very well. Like, they could be one of the dark They horses. won today, I think 2-0 or Yeah, something. yeah, Yeah. yeah. And Anurag, you went Casemiro away red and card. You went away and Casemiro Real has got a Madrid straight into red card. who? ये तो डिफ्लेक्शन टीम है भाई, डिफ्लेक्शन से ही जीत रहा है अगेंस्ट यूनियन बर्लिन, अगेंस्ट डिफ्लेक्शन टीम। मैं क्या बोलूं, फ्लूक। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इट्स ओके। हाँ, बिग अप उत्कर्ष ब्रो। अब मैं क्या बोलूं? Big up Utkarsh bhai, big up Abhishek bhai. Abhishek bhai was waiting for Anurag bhai to come back. People, before मैं Anurag bhai के पास जाऊं, United have a red card. Oh, क्या आज United Icardi missed से? a penalty. Icardi missed a penalty for Galatasaray. अरे Icardi missed a penalty for Galatasaray. कर्मा इज आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड। पर अगेन मैं वही कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा लाइक लक भी आपको लग रहा है रियाल के साथ लक भी बहुत जा रहा है, लाइक अगेन द गोल दे स्कोर्ड एंड द गोल दे गॉट। बट वो See, पेनल्टी भी तो नहीं था उनके अगेंस्ट। कौन सा? वो जो हैंडबॉल वाला पेनल्टी था, आई थिंक हाँ, आई थिंक वो हार्श था। That was not a penalty. Where That would was you? not a- That was a natural course of action. That was never a penalty. Yeah. Plus, this goalkeeper, I mean, I think he could have done better in this. Or maybe I think he could have done better. Gareth It has was a scored huge- 2-3. एटलीस्ट कहीं पे तो अच्छा न्यूज़ आए भाई, कहीं पे तो अच्छा न्यूज़ आए भाई, कहीं पे तो अच्छा न्यूज़ आए, कहीं पे तो अच्छा न्यूज़ आए। गलाटासाराय इज माय फेवरेट टीम मैन, तुम लोग जानते हो, मैं तुम लोगों को मैंने बोला था Icardi has scored the goal. अर्जेंटीनियन गाय, आई थिंक इकार्डी यार। लेकिन यार मुझे Wanda कहीं पे magic लग is रहा है- Nikanda. Wanda magic is everywhere, bro. Wanda magic is everywhere. And Inter played brilliant in the finals. They forward rhythm down. I will only say one forward, that is Lakaka. Mohan Bhai, Fateh Bhai, please एक तो खुश खबर दे दो। मोहन भाई, फतेह भाई, है कोई खुशखबरी आपके पास? Galatasaray है कि मतलब if that is an upset, then I don't know. I mean, Ten Hag might not last, I think, beyond Yeah. November. Yeah. Oh Yeah. my God. ये मैंने Brentford पिछले is सीजन ठीक है। में हो गया। You know, with United, the thing is, there's a takeover talk going on. I think until Yeah. the takeover from Saudi happens, or I think United will Bayern has scored. not be bad. Bayern अभी Bayern ने गोल मारा है। Oh my Bayern are winning against Copenhagen. And Lons are still beating Arsenal? Yes, 2-1. Lens are still beating Arsenal. I think What that are match you will be saying, very Nadia? interesting. Actually, I might as well Yeah. switch over to that match for a while. I think if City can beat Arsenal at the weekend, that might puncture the Arsenal story already. If City can Yeah. just हाँ, do it. I mean, even if the result goes negative, even if City don't beat Arsenal or lose, nothing's over for City. But if City can beat Arsenal, their Yeah. confidence can just kill them Confidence off. goes. That's Yeah. one title But rival. Mohan gone. क्या मैं हुआ आपसे यार? पूछना क्या चाहता हुआ था। है? See the matchman, something they are demanding to the ref. What happened? हाँ, पेनल्टी डिमांड कर रहे हैं Napoli. It's a penalty again, man. Come on, this night, yeah. Thank you so much for this good news. अरे, come on, यार, come No, on, I come on, don't come think on. it's. I don't think it's a penalty or something. No. एक मिनट No, I mean, नहीं, you can't penalty give anything. that will be harsh. That will be really harsh. अगर ये That will penalty be की। really harsh. नहीं Thank you so much for this good news, San Mia San. तो मैं जल्दी से आप तीनों से पूछना चाहूंगा, what's the final score इस मैच में Napoli रियल में? क्या आपको लगता है 3-3 I होने think वाला it है? could be 2-3. I think ये 2-3 रहेगा क्योंकि ऐसा बैंगर मारने के बाद I know Caballos will come in. I think मुझे नहीं लगता ऐसा बैंगर मारने के बाद और कुछ हो सकता है. Comeback पता नहीं यार, पता नहीं. I'm just switching. Vinicius over to- Junior is going away, man. I think now they will become much more defensive. मैड्रिड का दे देते वो पेनल्टी, बट आई थिंक मैच अब लग रहा है वैसे ना, सच कह रहे हैं अनुराग भाई, आई थिंक द गोल मारा ना, आई थिंक इट्स टेकन द स्किन आउट ऑफ Napoli, लाइक दे प्लेड वेल बट आई थिंक स्पिरिट थोड़ी ब्रोक हुई है उस गोल के बाद ना, एंड Napoli विल हैव टू टेक अ लॉट। बट विनीशियस जूनियर जा रहे हैं तो अटैकिंगली रियल की थ्रेट अब थोड़ी निकल गई है, तो हाँ, Napoli Ceballos will might try come to Ceballos is coming on for Vinicius Junior. Wow, Lens Arsenal is a very interesting result, right? Yeah, absolutely. I think That's I am not satisfied with the That's the big goalkeeper's story. performance today. I am not satisfied with the goalkeeping. That was stoppable, that goal was stoppable. And also by the defensive structures that they are having after Kim left. I think ये बहुत गंदा चीज हो रहा है.
I think this will send shockwaves. Two big Premier League teams losing, United to Galatasaray and Arsenal to अरे Lens. नहीं, आई थिंक यूनाइटेड का शॉक वेव नहीं है, यूनाइटेड का Okay. पीपल वर वेटिंग, बट आर्सेनल का है, बट आर के लेंस आई एम हैप्पी, उनकी स्टोरी जो है ना यहाँ तक पहुंचे है, Yeah. आई एम हैप्पी Story फॉर आर that's के all. लेंस. And tomorrow City have a very difficult game against Leipzig. Leipzig away is not easy because Leipzig drew 2-2 against Bayern, right, at the weekend. हाँ, बट आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है मोहन भाई, विल सी एन एंग्री मैनचेस्टर सिटी, विल सी एन एंग्री मैनचेस्टर सिटी. We कल need जो a Bring angry Rodri Man back. City at the weekend. I think we need a angry because if they can beat Arsenal, that would be a statement in the league that okay, wait, I mean a hiccup here or there, but if Man City, I think they need to do that. Like especially now that Saka may be out of that game, that they've lost this match. I think वो जैसे गरम है. पर रॉड्री भी नहीं है ना फतेह भाई, रॉड्री के बिना भी सिटी, Oh, लाइक yes. रॉड्री इज समथिंग वेरी बिग. Yes. Rodri is a factor, but then it is Pep Guardiola. नहीं नहीं, वो मैं एग्री करता हूं, पर Works. मोहन में पता है क्या है, कैल्विन फिलिप्स थोड़ा लाइक आई लाइक कैल्विन फिलिप्स अ लॉट, लाइक वो मेरा बहुत अच्छा फेवरेट प्लेयर होता था जब लीड्स में खेलता था. But he's not इंजरीज के suited बाद to the City system. वो क्या है ना, हाँ. टाइट स्पेसेस में खेल नहीं पाता है Calvin Phillips. इंजरी से भी हेल्प नहीं करा ना उसके करियर को, लाइक सिटी आया, इंजर्ड हो गया, फिर उसका करियर डाउन पे डाउन जाता रहा. कोवाचिच मेरे को नेचुरल डीएम, चेल्सी में मैंने उसको इतना देखे नेचुरल डीएम वो है नहीं, नूनेस भी नहीं है, तो वो चीज जॉन स्टोन्स अगर वापस आ जाए तो जॉन हाँ, स्टोन्स the थोड़ा good सा news वो for खेल City सकता है. is both John Stones and Bernardo Silva are training. They are in the squad to face हाँ. Leipzig. I Okay. think Stones can play as a DM and he can work out from there. यूनियन बर्लिन अपने होम मैच स्टेडियम पे नहीं खेल रही, ये मेरे को नहीं पता था. Hertha Olympia Stadium, Hertha Berlin का स्टेडियम पे खेल रहे हैं. ओके. But Union Berlin themselves have been a really good story. Like यहाँ तक पहुंचना भी is a dream come true for. Like मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था. In my life I'll see Newcastle in the Champions League, Union Berlin in the Champions League, RC Lens in the Champions League. Like हम जिस टाइम से मैं फुटबॉल में आया था, I think it used to be गारंटी. मार्स से आती थी आपकी, फ्रांस से ओलंपिक लियोन फ्रांस से, इंटर मिलान, एसी मिलान, यूवेंटस फ्रॉम सीरिया, प्रीमियर लीग से वही यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल. So I think football has changed a lot, really changed a lot in my humble opinion. अनुराग, all is well. अनुराग भाई दुखी लग रहे हैं, तो जितेंद्र जी कह रहे हैं अनुराग ऑल इज वेल. अनुराग भाई क्या हुआ, बहुत चुप हो गया? नहीं, नथिंग यार, मैं क्या बोलूं. Oh, this अच्छा is चल रहा है interesting. मैच. मैं PSV enjoy कर रहा Sevilla हूं क्योंकि 1-1. PSV Sevilla 1-1 and Sevilla have scored again, so it's 2-1. ओह, क्या मैचेस चल रहा है यार, कमबैक मैचेस चल रहे हैं. ये टीम्स भी सोचे, अरे यार इतना घटिया क्रॉस कौन देता है यार. PSV have made it 1-1 in 86 This is a minutes bad and habit of Sevilla Rudiger scored. to just instigate players. में ये रुडिगर की बहुत गंदी चीज, ये बहुत गंदी आदत है. Anurag Bhai, PSV score in the 86th minute to make it 1-1. Sevilla score in the 87th minute, just after 50 seconds. Who may say Napoli can score in the 90th minute? Who can say? यहाँ पे एक चीज हो सकता है भाई लोग, या तो रियल मैड्रिड एक और गोल मारेगा 90 मिनट्स के बाद, नहीं तो नपोली 3-3 कर देगा. अगर ड्रॉ भी हो जाए बहुत बड़ी बात है. हाँ, नैपोली के रोबोट का इज गेटिंग रिप्लेस्ड भाई. बट अनुराग भाई मैं ये कहूंगा, आई थिंक नैपोली ना बहुत बड़ा चांस खोया है बर्नेबो पे जाके, लाइक जीतना मुश्किल होगा अब, और आई थिंक अवे गोल जा चुका है, तो अगर नैपोली यूनियन बर्लिन को भी थ्रैश कर देती है, ब्रागा को थ्रैश कर देती है, तो तब भी अब अवे गोल रूल जा चुका है, तो दे कैन स्टिल फिनिश टॉप. बट उनको बर्नेबो पे जाके या तो आई थिंक फतेह भाई विल एग्री विद मी कि देखो यूनियन बर्लिन को थ्रैश करना इट विल बी इजी फॉर नपोली, क्योंकि नपोली का प्रॉब्लम है डिफेंस. यूनियन बर्लिन तो अटैकिंग गेम प्ले ही नहीं दिखा था, तो उसके लिए नपोली को कोई डिफिकल्ट नहीं होगा. लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग इन बर्नेबाउ अगेंस्ट रियल मैड्रिड, वो लोग क्या करेंगे. आज तो मौका था यार, आज तो मौके पे चौका था, एंड यू गॉट अ पेनल्टी, इट्स 2-2, एंड देन अगेन अ पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द गोलकीपर. यार डिफ्लेक्शन, उतना भी डिफ्लेक्शन नहीं है भाई, उसने बहुत जल्दी जंप मार दिया यार. आई थिंक यार you were just copying Borussia Dortmund policy in Serie A. पता भाई मैं पूछना चाहूंगा, मेरे को पता है अलग क्वेश्चन है, बट आई थिंक रूडी गार्सिया की जगह कुड नैपोली नॉट गॉन फॉर वाइकन्जो इटालियानो, जिस तरह वो काम कर रहा है फ्योरेंटिना में, द फुटबॉल फ्योरेंटिना खेल रही है. वो he doesn't defend at all. Like, oh, it's crazy. They're fighting Arsenal versus Lens. They're fighting. Oh my god. It was an open goal and Arsenal missed it. Who is the center forward of Arsenal now? Jesus. Gabriel Jesus. Bas, khatam. That man is Higuain of Arsenal and EPL. He destroyed Man City few years ago. Now he was destroying Arsenal. I think Arsenal too, yaar. मैं आर्सेनल फैन दोस्त को कॉल करता हूँ, वो बहुत
That's what all Arsenal fans do. They win this pre-season trophy, and then they're suddenly like, like we are. एक कम्युनिटी शील्ड जीत के they have हम भी won the जीते थे, FA thing. They हम भी celebrated प्रीसीजन the ट्रॉफी जीते community थे और shield मैंने like बहुत they हाइप करा था won तो Champions League for the third time in a row. हाँ. That point was from a deflected But I goal. think वो Napoli बहुत is दो बार playing a deflect very होके good अंदर गया. possession gameplay now, यार. Napoli is playing a very good possession gameplay. oh cleared Rudiger. Yeah, Rudiger, I love him, yaar. He's my one of my favorite Chelsea players last 5-6 years. मैं like Rudiger is man, true leader है ये बंदा, true leader है. हाँ. कितना मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम देगा यार? 7 मिनट है क्या 8 मिनट? I think 7 minutes है, यहाँ पांच. शो नहीं हो रहा. यहाँ तो 5. लबोटका को हटा दिया यार. This is a very यार क्या यार? 5 minutes of extra time, guys. Just 5 minutes of extra time, and it's I think क्या free kick or something else? अरे ठीक से तो दिखाओ स्क्रीन को. Big up Poetic Scales, people please जाइए do subscribe to Poetic Scales. Saransh भाई great content and description पे भी City Unplugged पे जाइए do subscribe. Sports Freak do one subscribe and do like and subscribe and big up to Fateh Bhai as well. Big up Poetic Scales and hopefully you're well and good my brother. यहाँ पे free kick है Napoli play. It's +4 in the Lens and Arsenal game. क्या हुआ? साका, हाँ साका Plus इंजर्ड हो गया 4. मैच में संजीव भाई. हाँ, thigh injury. उसकी पहले से थी लाइक अनुराग सॉरी मोहन भाई, आई वाज स्टन्ड. दे वर बीटिंग बोर्नमouth और साका को वो फिर भी खिलाया जा रहा था. अटेटा लाइक अटेटा ने बहुत गलत मैनेज करा है साका को, बहुत गलत मैनेज But करा है. honestly, I was not worried with the wingers क्योंकि हमारा Vasco Guardiola है एक side और Walker है. We could have easily defended both their wingers. So I don't think that was a problem for us. हमारा problem है to stop Odegaard and Declan Rice actually. So that will be the thing. Come on 5 minutes added on guys, सिर्फ 5 minutes added on. I think संजीव अगर होता तो कुछ क्या होता मुझे पता नहीं, बट हमने बांट लिया मिल बांट के दो भाई. मैड्रिड और बार्सिलोना ने दिल बांट तोड़ दिया लिया संजीव भाई. इन दोनों को संजीव हमने भाई बांट दिल तोड़ लिया. दिया. I'm still not forgiving. Like मैं बहुत रिस्पेक्ट It's करता a हूँ free मरीना मैच kick. की, लेकिन It's a free kick in the Arsenal versus Lens match. Fabio Vieira is Christensen taking was the one of free my kick. favorite players. Like जब अपने बेस्ट पे खेलता था, he used to be one of the top defenders में देखा था. उसका सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या होता था बड़े मैचों के टाइम, स्टमक पेन हो जाती थी. आई डोंट नो कि कोई प्रॉब्लम ना हो. अगेन आई लाफ भी नहीं कर रहा मैं. आई रिस्पेक्ट हिम एंड लव हिम, बट ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर. फतेह भाई के रिएक्शन से लग रहा है कुछ हुआ है. कुछ भी नहीं हुआ, बट दे आर प्लेइंग वेरी वेल नपोली. अरे वो लॉन्ग रेंज बैंकर कौन छोड़ सकता है? एंड द गोलकीपर आई थिंक ओशी में, कम ऑन यार, 5 लोग ओशी में को ब्लॉक करके रखे हैं भाई. नपोली प्लेइंग वेरी वेल. ये अकल आया सेंटर फिश काटे आई थिंक लास्ट में. Rudiger, honestly, I thought he could never play in a 2. I always thought Rudiger could always play in a नहीं, लोग 3, कहते थे but- चेल्सी के टाइम पे कि रुडिगर से बैक थ्री मर्चेंट, लेकिन मैं कहता था ऐसा Chelsea's नहीं time, है. exactly. चेल्सी के पास डीएम होते नहीं थे. अब चुमिनी है आपके, रियल मैड्रिड के पास स्ट्रक्चर है तो ही इज लुकिंग बेटर. चेल्सी के पास डीएम ही नहीं होता था. कोवाचिच एक मतलब जो सेंटर मिडफील्डर है वो डीएम खेल रहा है, और जॉर्जिनियो, तो दे वर इजी टू बाईपास बाय. ओ चांस ही ऑसम इन प्ले. Did Lons win though? Did they survive? I hope they win, man. It's one more minute. It's one more minute, and ball is in Arsenal's box. It's a shot. It's a shot. Clear it. Clear. Yes, ball's cleared now. One more minute to go in the launch match. Oh man, I love this stadium. Like I've been watching football here since '98. This beautiful stadium, and corner 2. बट आई थिंक कैपा को भी क्रेडिट देना पड़ेगा. आई थिंक Arsenal scored the goal. Arsenal scored. Corner to Arsenal. Final kick of the match is corner to Arsenal. Oh my god, they'll score फिर तो. Oh, it's 2-2. PSV Sevilla. PSV Sevilla is 2-2. Damn. PSV have scored in the 90 plus 5th minute. लास्ट चांस फॉर नपोली. हाँ, Last chance for Arsenal. उससे भी कम रह गया. आई थिंक ओनली 1 मिनट Last 30 chance सेकंड for रह. Arsenal. यार ये भी इंटरेस्टिंग है, बट वेल डन यार. मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा फर्लन मेंडी को. लाइक रियल मैनेज बहुत अच्छा कर रही है गेम को एंड में. Furlan Mendy is defensively very, very good. Attacking is shit. Look at the Devils laugh at Mohan Bhai face. He's really enjoying Arsenal and Manchester United's goal. And I think Mohan Bhai is going to have a party after this stream ends. Like, Yes. I think it will he's be a gonna very have good day big for Both of them Mohan, lost. but Sanjeev, it's not a very Rivals. good day for us. Rivals.
पर वैसे अनुराग भाई United आपको, and मेरे को लगता है आपको टेंशन भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक आप जिस तरह फुटबॉल खेल रहे हो अभी, आई डोंट थिंक आपको इतना वरी होना चाहिए Fateh यार, Bhai, क्योंकि 4 minutes and 30 seconds अगर यार gone. आपके Corner सामने ऐसा again to खेले, Arsenal. Referee is not blowing. The type of Come performance on, Real Madrid man. is showing against Napoli, if they Still मतलब हम not तो शो blowing. भी नहीं देंगे इतना. हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि Clear अगर If it. you वो are आपके telling गेम our में, team 2 साल पहले का बार्सिलोना टीम होगा तो Real Pata, Madrid का lawns कोई have चांस नहीं, won. but Lawns have everything won. Lance can have be won. Lance have everything won. can be everything can be No, difficult for referee has us, still but not blown. winning against No, Madrid is blown. not a very tough thing for us. Yes, referee has blown. Lance have won against Arsenal. 2-1. What a beautiful What, stadium, man. Lawns have. Felix Godard. what a beautiful हम्म, story as Oh, well. what a save भाई, ओ भाई केपा यार, अच्छा लास्ट चांस था यार, क्या शॉट यार, क्या Awesome. सेव. Yeah, नहीं तो yeah. इजी, मतलब शॉट थोड़ा बेटर हो सकता था ये. शॉट थोड़ा सा बेटर हो सकता था क्या. हम्म. Rudiger keeping great strikers not to express and play their natural game. मैच खत्म Alan होने के Mete, today बाद awesome. 5 मिनट हम देख लेंगे, थोड़ा सा हम वो टेबल देख लेंगे, एक बच्चे कर लेगा. आई थिंक द मैच इज अप मैन. I think Real Madrid has won the match, and it's the brilliant long-range banger that helped them to win the match. And I think it's Real Madrid 3, Napoli 2. Now, okay, Napoli guys, too. can So we guys, get this match is over. थोड़ा सा स्कोरबोर्ड को दिखाओ यार फतेह भाई को एंड मुझको, क्योंकि मैं फतेह भाई सोच रहे थे हाँ we'll stay till the first मैं half, सारे लेकिन यूसीएल मजा मैच नहीं का आया. लोगों स्कोर कार्ड लेके आ रहा हूँ. Yeah, we won. Inter won, so I'm happy. Lots of मैं chances. सारे They यूसीएल moved. लेके आ अच्छा रहा लग हूँ. रहा है सारे ना Lost यूसीएल फतेह our भाई. मैच. I just Arsenal wait, lost and I'm just United telling फतेह lost. भाई something यार. Hmm. गेस्ट को भी बोलने दो. दैट थिंग इज दैट कि भाई फतेह भाई अच्छा ही है ना कि घर में अकेले मैच देखने से 4 people in the panel watching matches are very much better. UCL Yeah, nights, yeah, you can cherish the UCL nights. yeah, yeah, yeah. Oh, that was a roller coaster. The game was also very good, 3-2. Every game, And you know, every I game. think if we had seen the Man U Galatasaray game, we would have really enjoyed that also. They are actually still playing. It's +7 there. Oh my God! We can switch on into that game. We can switch on into that game. Why not, man? UCL nights बार बार Yeah. नहीं आते भाई. Let us see United on the attack. 10 seconds to go. Please, Galatasaray, do something and win. Offside. जब मैंने बोला था गलाटासाराय यूनाइटेड को हराएगा, तब nobody believed me. Nobody believed Yeah, me. but then the Nobody thing was believed me. different. They were making fun of me, especially this Shrey Oberoi. मतलब brother of Vivek Oberoi जी. Vivek Oberoi Yeah, जी क्या भाई it's Shrey equal. Oberoi was making अनुराग भाई fun सब of इक्वल हो गया. me. वो you फतेह were भाई, making fun फतेह of भाई, me. फतेह भाई, ये हमारे जो दो पैनलिस्ट है ये कह रहे थे. United lost. मैंने क्या बोला था, पीएसजी को मैं अंदर से चाहता हूँ. मैंने क्या बोला था मोहन भाई को, मोहन भाई और मैंने, कि क्योंकि मैं और मोहन रात के 2, 3, 4, 5 बजे तक बात करते रहते हैं फोन पे, ठीक है. वी आर ब्लडी इंसोमनियक्स. तो मैंने मोहन को बोला था ऐसे, मैंने क्या बोला था भाई, मैं जो देख रहा हूँ, I was also talking to Coach Riz. By the way, Poetry Skills has given me the number of Coach Riz or something like the address or something like this. मैंने बोला था Man United is not ready. I think 3 teams needs at least 2 years of time. That is Chelsea, Man United and Real Madrid. अंदर से ये लोग क्या है, नाम कमा के ये लोग खेल रहे हैं. ट्रस्ट मी गाइस, रियल मैड्रिड का टीम, मैं अगर टैक्टिकल एनालिसिस करने को बैठूं, डिफेंसिव स्ट्रक्चर में 1 नहीं 5 नहीं 6 गलतियां है. आई थिंक नपोली का टीम इज नॉट रेडी एंड आई थिंक इट्स अ लॉन्ग रेंज बैंगर दैट मेड देम. मैं यही बोलना चाहता हूं कि मैंने क्या बोला था फतेह भाई, श्रेय भाई को, हम दिल से चाहते हैं पीएसजी हार जाए. और मैंने फर्स्ट में इन द बिगिनिंग ऑफ दैट स्ट्रीम मैंने बोला था आई नो कि मैन यूनाइटेड नहीं जीतेगा. श्रेय भाई वाज लाइक दिस क्या बोल रहे हो तुम, आप जाके स्ट्रीम देख लो, मेरा प्रेडिक्शन सही होने वाला नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं, मैं ये बोला. लेकिन डोंट गेट अवे कि आप सब कह रहे थे कि पीएसजी विल गो टू यूरोपा लीग, और जब मैंने कहा था कि पीएसजी No. We wanted Mbappe to go to the Europa League, not PSG. Mbappe. ओके ओके. अरे फतेह भाई, हम जल्दी अभी भी डिस्कस ग्रुप खत्म नहीं हुआ. फतेह भाई विल गो टू स्लीप नाउ. हाँ, मैंने क्या बोला, आई वांट दैट पीएसजी एंड इट्स अल्ट्रास टू गेट पेरिश्ड. मतलब आई वांट देम टू पेरिश. ये टॉक्सिसिटी नहीं है, द वे दे हैव ट्रीटेड लियोनेल मेसी एंड नेमार. मैं ये बोला था मजाक करके, लेकिन मैंने फर्स्ट प्रेडिक्शन दिया था मैन यूनाइटेड विल नॉट गेट क्वालिफाइड फॉर द सेकंड I remember राउंड. that. तो आज हो गया. Yeah. हम्म. What a नहीं, वो तो again, मैं देखो legacy, आपसे you पूरा know, agree करता हूँ. Galatasaray scored 3 goals in 94-95 at this stadium, and they've 20 years, 20 कितना है?
30 years down the line, they've again scored 3 goals at Old Trafford. Amazing. I mean, amazing. Two of my favorite players are there, na? Martin Ziyech. Anurag Bhai, it was me. I told first Man United will lose one match against Gala, but अपने घर पे. हाँ. But I think guys, let's get back into the table, and I think अब chat section को थोड़ा सा delete करके we should move into the table. Let's see के positions कहाँ पे है टीमों का. I think so, guys. Coming onto the table now, और यहाँ पे अब सारा पे UCL के tables है. All the groups are here. तो मैं एक बार एक banner हटा के United table is very interesting. 0 points after 2 matches. I don't think there's any other. I team want with 0 Sanjeev's points. No. I want Sanjeev's chat to get highlighted into the screen first. Then we will start into this thing. Sanjeev का last comment highlight करो थोड़ा सा. And Yeah, sure. I've done it. But उससे फिर आपका चेहरा दिख जाएगा ना? ठीक है, अब हो गया ना, सबने देख लिया. This is for the proof. Now just get back into the table. Fateh Bhai, अब हम first of all we'll talk about the group A. because Lens are top, but Sevilla won't be an easy match for Arsenal. Sevilla home and Not away will easy, not be not easy for easy, Arsenal, right? Not Not easy at easy. all, and they have lost to Lens. and I think this is why I'm saying, like if City can just put the dagger in, then suddenly I think Arsenal will qualify from this group. It's way too easy in a way. मुझे लगता है Odegaard will get a nice bashing from Ramos, and Rakitic will be on fire against Arsenal. मुझे लगता है ये थोड़ा सा बहुत मतलब easy match तो नहीं होने वाला है. By the way, guys, let's get back into the table. Group A. Manchester United have conceded 7 goals in 2 matches. Yeah, they conceded against 7 Bayern goals. they conceded 4. हाँ, 4-3 loss and they've lost 3-2. तो पहले मैं आना चाहूंगा यहाँ पे, मैं ग्रुप ए में पूछना चाहूंगा. देखो मुझे जितना लगता है ग्रुप ए अभी भी बहुत टाइट ग्रुप है. आई थिंक अभी भी इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है, बट बायर्न का आई थिंक इज कंफर्म नाउ कि बायर्न विल इजीली गो थ्रू, क्योंकि दे हैव गॉट द 2 विंस आउट. तो पहले मैं जाना चाहूंगा अनुराग भाई पे. एंड अनुराग भाई, आपको जैसे ग्रुप Just के a आपके second, सेक्शन में just a जाता हूं. second. Before going to Anurag, Yeah. just a second. Fateh Bhai, I think you remember Atlanta, I think 2 years ago, had 0 points after 3 matches. City went top of that group, and they qualified from the group. They were the first team in history, something. So anything's possible. Yeah. Anything is possible that way. But I think Man U went through, or Atlanta went through. Yeah, United went through. United went through. They lost to Young Boys. They lost to Atlanta or something, and then they came back. But नहीं, Atlanta से हारे नहीं थे. No. I was that. No. There was a season where an Italian team was with Manchester City, and City were top the group, and that Italian team won 0 matches after 3. Yeah, that They was had 0 Atlanta points only. after 3. Atlanta. Yeah, that was Atlanta. qualified. Okay. Atlanta qualified from that group. 2019, 2020. Yeah, Right before 1920. COVID. Exactly. Yeah. Right before COVID. Yeah. Atlanta. They lost 3 games, I think. 3 games And they qualified with 6 points or 5 points or something like that. Yeah, 5 points, 6 points. Yeah, that was a record. That was a record back then. Yeah. So I think it can happen. But yeah, Bayern have won this group easily, and we are sleeping on Copenhagen. I think if Copenhagen can get a draw against Man U, wow. I mean, I think You know, Copenhagen they could qualify actually. Copenhagen could qualify in second place. yeah. Totally. अनुराग भाई, आपकी जैसे शक्ल पे जो हंसी दिख रही है, जो खुशी दिख रही है, हाँ, because it थोड़ा was मुझे one of the most impossible, and people were telling me कि यार तुम idiotic बातें कर रहे हो. Man United will get easily qualify after Bayern Munich. मैंने बोला था ग्रुप एफ जो होए है ना, ग्रुप एफ से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैंने ग्रुप पे भी लिखा था. आई कैन सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स. ग्रुप ए में चक्कर चलने वाला है, एंड मैंने बोल के रखा था कि मैन यूनाइटेड परफॉर्मेंस, स्पेशली देयर डिफेंस जो आज है 7 गोल खा गए 2 मैचों पे. इट वाज अ इम्पॉसिबल प्रेडिक्शन. ऐसा प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है. No, but Anurag bhai, when you predicted, everyone at United were fit. Now Luke Shaw is injured, Malaysia is injured, Van Bissaka is injured, Lisandro Martinez is injured, Varane is just returning. So all of their first choice defense is gone, right? So at that time, when I saw that defense, when we saw Luke Shaw, Lisandro Martinez, and everyone, I thought it would have been easy qualification. But now injuries and stuff, we can't do anything. आज यूनाइटेड की इंजरीज भी बहुत ज्यादा है. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4-4-2 या 4-3-3 से तुम I was actually following Man United Erik ten Hag's little bit of Erik ten Hag's matches and his tactical analysis मैं follow कर रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन लेना था. थ्री पंडित शो तब एक मॉडल बन गया था. मैंने सोचा था कि थ्री पंडित शो हिट होगा तो बहुत काम पे आएगा, तो मैं उस शो के लिए बहुत काम किया था. मैंने मोहन को फोन भी किया था. आई थिंक
मोहन को या फिर सबको फोन किया था मैं लिस्ट बना के रखा था, तो मैंने क्लियरली बोला था मैन यूनाइटेड इज नॉट दैट टाइप ऑफ टीम दैट कैन क्वालिफाई इन द फ्रॉम द फर्स्ट राउंड. तो आई थिंक माय प्रेडिक्शन, आई थिंक मैं ये बोलना चाहता हूँ बायर्न तो इजीली क्वालिफाई कर गया भाई ग्रुप ए से. आग बंद करके देख लो. लेकिन बायर्न पे भी मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ. बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं है इस यूसीएल पे जो हम लोग सोच रहे हैं. फतेह भाई ने जो बोला हम गलत भी हो सकते हैं. बायर्न बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं है इस यूसीएल का, एंड आई कैन अश्योर यू दिस. एंड मुझे लगता है मुझे लगता है कोपेनहेगन कुछ जलवा दिखा सकता है. आई थिंक एंड आई नो फतेह भाई आप क्या बोलना चाहते हो. व्हिच टीम आफ्टर बायर्न म्यूनिख do you think? I have a feeling that Copenhagen might do it because I think Galatasaray will lose 2 games to Bayern, but I want Galatasaray to go through. I want Galatasaray to My go favorite team is Galatasaray. Why not? लेकिन मुझे लगता है कि Copenhagen can. I think Copenhagen and Bayern from Group A. Now it's Mohan and Shrey bhai. पहले I मोहन भाई actually आप want बताइए. Man United to say, but just a minute. I actually want Man United to finish third. साढ़े वो Europa League में. That's what I want them to do. Go on, stay by. नो मेरे को जितना लगता है देखिए आई थिंक इन दिस ग्रुप अभी भी आई थिंक प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. आई स्टिल बिलीव कि यूनाइटेड कैन स्टिल कम टॉप टू आ सकती है क्योंकि आई थिंक कोपेनहेगन के मैच में अगर यूनाइटेड दोनों मैच जीत गई देन इट कम्स टू गैलरीज यूनाइटेड सिंपल मस्ट विन मैच में यूनाइटेड. और अभी भी जिस तरह बायर्न खेल रही है ना, आई वुडंट बी सरप्राइज कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे यूनाइटेड गेट रिजल्ट आउट ऑफ देम. तो ये ग्रुप बहुत ज्यादा ओपन है. बायर्न भाई couldn't score against Copenhagen in the first half, fully agreed. और बायर्न भी अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन when you finish first in the group you get an easier draw in the next round. तो इसलिए मुझे लगता है बायर्न को ये हेल्प करेगा एंड आई थिंक बायर्न इज थ्रू. जैसे मैं सारे पैनलिस्ट से एग्री करता हूं एंड आई थिंक ओवरऑल आई स्टिल विल गो विद मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज़ इट इज सेफ चॉइस एंड आई स्टिल बिलीव they'll beat Copenhagen. चाहे अच्छा नहीं खेलेंगे, if they don't then Hang is 100% sacked. Yeah. I don't think United beats Copenhagen. Both home and away. It's very difficult. They might, but at least the form I see now, it's very difficult. And now coming to Group B, मैं इसमें भी पहले I go back to again अनुराग भाई. अनुराग भाई प्लीज डू लेट मी नो Group B कि आपको कैसा लगता है ये ग्रुप कैसे जाएगा और आपका रिएक्शन क्या है रिजल्ट्स में जो इसी दिखाई है. आज का मैच का रिएक्शन देखने के बाद, बाय द वे व्हाट वाज द फाइनल स्कोर? अरे final score was Lens Arsenal won 2, against Arsenal Arsenal 1, 2-1. PSV 2, Sevilla 2. I think Arsenal I think मोहन तू पहले बोल इस ग्रुप के बारे में. Yeah. So the difficulty for Arsenal here is, I think Arsenal Sevilla home or away तो matches होंगे. I think that will decide whether Arsenal will qualify or not. Arsenal I think have to win one of them. Arsenal Sevilla. So the easier thing for Arsenal is today Sevilla drew with PSV 2-2. अगर Sevilla जीत जाती with PSV, then Arsenal defeated PSV, Sevilla also defeated PSV. Then that would be a straight shootout. But I mean, that would have made life tougher for Arsenal. So still think Arsenal will go through from this group. But why na Arsenal ka? How will they manage the title race, Champions League, this thing, football minutes, कैसे manage करेंगे players का? That's gonna be a challenge this season. एंड फतेह भाई आपकी इस ग्रुप में आई थिंक मैंने नहीं बोला, मैंने जो बोलने वाला था द बेसिक डिफरेंस इज के आज लेंस के साथ मैच था ना उन लोगों का. सो मैं यही बोलना चाहता हूँ. मैं देख रहा था एंड मैं तब देख भी लिया था एक बार स्क्रीन के बगल में कि आर्सेनल यूज्ड 4-3-3. आर्टेटा ने 4-3-3 यूज किया एंड लेंस ने यूज किया 3-4-2-1. 4 man in the midfield. So I think against 4 man in the midfield you are using 4-3-3. I think this was the main problem. 4-3-3 I think 3-4-2-1 के खिलाफ कैसे चलेगा भाई? कभी चल ही नहीं सकता ये फॉर्मेशन, बिकॉज दे आर प्लेइंग, मतलब कभी चल ही नहीं सकता टैक्टिकली समझाऊं तो. लेकिन मुझे लगता है यार आर्सेनल विल क्वालिफाई इजीली फ्रॉम हियर. मुझे नहीं लगता आर्सेनल यार. आई थिंक आर्सेनल हैज टू क्वालिफाई. Anurag Bhai, the thing about Arsenal is Pep na kya kar raha hai from the last 2 times against Arsenal. He's not bothering about this. How do I pass through Arsenal's midfield? Long ball to Kevin De Bruyne. De Bruyne to Haaland, goal. Long ball to Haaland, Haaland taps down, De Bruyne, goal. So he's just bypassing the entire Arsenal's midfield. तो अरे सलीबा also played today's match यार. कैसे हो गया यार यहाँ पे मिडफील्ड में? राइस, ओडेगार्ड, हैवर्ट्स, सलीबा भी पीछे था. आई थिंक गैब्रियल जेसस ने एक येलो कार्ड भी देखा आज. आई डोंट नो यार हाउ कम इट हैपेंड, बट यार दिस इज यूसीएल यार. तुम्हें एग्री करना लगेगा. लेकिन
भाई मैं इस ग्रुप बी का प्रेडिक्शन तो नहीं दे सकता यार. इट्स वेरी टफ. इट्स वन ऑफ द टफ. मैं ग्रुप बी It's से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं लिया था. इट वाज इजी फॉर एवरीवन कि आर्सेनल एंड सेविया को सबने चूज किया था, मुझे याद है. बट आई थिंक इट्स टफ, तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला. एनीथिंग कैन हैपन. मैंने इस ओके, ग्रुप बी और के फतेह बारे में भाई? यही बोला कि ये यूरोपा लीग का ग्रुप है, चैंपियंस लीग का ग्रुप नहीं है, एंड दैट्स व्हाट इज Very हैपनिंग. true. Very true. हम्म. Very true. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. फतेह भाई कुछ बोलो ग्रुप बी के बारे में. I think that Sevilla loves playing in the Europa League. You know, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो Europa League में चले जाएंगे. But I still think, even though Ramos Lons versus have a Salah. good, Ramos versus Salah again. yeah, exactly. But I feel like, I think Arsenal Sevilla should be able to go through. You know, I don't think, even though Lons have won today, I think Arsenal at home वो सबको हरा देंगे. I think हम्म. Lons, Sevilla, and PSV. So I think they'll easily qualify Arsenal. But let's just hope City beat them. Hmm. Fully agreed. Yeah. और मुझे भी ये लगता है कि I think as much as it's a good loss today, I still believe Arsenal are too strong for this group. अपने घर पे I think they'll beat everyone and I think they'll comfortably finish first. One loss होता है UCL group में, UCL night में, but Arsenal का class बहुत ज़्यादा है. I think they'll return in form and Arsenal I think in this group will easily get through and Sevilla will be second and hopefully I think Lens I will love to see them in Europa League, so Lens will be third and PSV fourth. तो See, coming we on are the next again we are going after big names, but I think this UCL is not about big names. We are again going It's after gonna big be names and interesting. its philosophy. We are going again Real Madrid, यार Real Madrid, Real Madrid. But यार तुम tactical analysis देखो तो heat maps चेक करो. Real Madrid पिछले 20 सालों में सबसे कचरा खेल रहा है. अब अच्छा सा टीम नहीं आ रहे उन लोगों के सामने. एथलेटिको दी मैड्रिड आ गया, एक्सपोज हो गए वो लोग. ठीक है, बार्सिलोना आएगा और एक्सपोज हो जाएगा रियल मैड्रिड. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार वी आर गोइंग आफ्टर बिग नेम्स. बट मैं इस ग्रुप के बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है यार लेंस कुछ कमाल कर सकता है इस बार. मुझे Nice, क्यों भाई. लग रहा if है. you if you look at the group also, ये कर्मा के ऑर्डर में है. आर्सेनल को हमेशा बायर्न म्यूनिख के साथ खेलना होता है एंड वी क्रैश्ड Ah, विद बायर्न yeah. म्यूनिख. And दैट्स I व्हाई वी think आर सेइंग Thomas and सेविया को Wadi, खेलना they होता are है यूरोपा in a very लीग good में, form. तो They थर्ड are in अरे a but very ये पोजीशन good है. form. आर्सेनल मोहन भाई दिस आर्सेनल ये आर्सेनल को नथिंग बी अफ्रेड टू बी ऑनेस्ट बायर्न म्यूनिख से लाइक टू बी ऑनेस्ट ये आर्सेनल साइड को कुछ नहीं फेयर करना चाहिए. बायर्न म्यूनिख राइट नाउ आर प्लेइंग वेरी बैड. मैं सच बोलूंगा बहुत गंदा खेल स्पेशली रहे द डिफेंस. क्या खेल रहे हैं यार, हैं. क्या खेल रहे हैं. उस दिन मैन यूनाइटेड ने कैसेमीरो ने 2 गोल मार दिया उन लोगों को. क्या खेल रहे हैं यार. हाँ. एंड कोई भी फॉक्स इन द बॉक्स प्लेयर जाके गोल मार सकता है बायर्न म्यूनिख को, कोई भी. बाय द वे वी शुड गो टू ग्रुप सी नाउ. ग्रुप सी इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ. तो अगेन मैं फिर से अनुराग भाई से नीचे से ऊपर पे आऊंगा. अनुराग भाई प्लीज अपना बताइए ग्रुप सी में रियल मैड्रिड, आई नापोली, थिंक रियल ब्रागा, मैड्रिड यूनियन जिस ग्रुप बर्लिन. में है, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद फतेह भाई. I मैं still फतेह भाई आप feel बताइए. Napoli. I still feel Napoli might go out. You know, because Yeah. I know, I have a feeling because that defense is really bad. How they cope up now, I think they've got 2 games against Union Berlin. I won't be surprised if Union Berlin get 4 points there, and we are looking at, you know, Napoli 4, Union Berlin 4, Braga 3, and Real Madrid have already qualified with 12 points because वो defense नहीं है अभी तक. It's not clicking, you know. आज भी I think Real Madrid, okay, Napoli had chances, but Real Madrid also had a lot of chances. I mean, that were right through the middle only. Teams can hurt Napoli this season. आज बेंजिमा होता ना तो नापोली को बोल के गोल मारता. द स्कोर कुड Yeah, हैव बीन 5-2 और 6-2. exactly, इट कुड हैव बीन exactly. 5-2 or 6-2. Yeah. तो आई थिंक फॉर मी इट्स रियल मैड्रिड. इट्स वेरी क्लियर. ये तो बोलने का कोई आई थिंक आई एम वेस्टिंग माय टाइम. एंड आई थिंक इट विल बी ब्रागा. द सेकंड वन विल बी ब्रागा. ओके. फर्स्ट वन विल बी रियल मैड्रिड, सेकंड वन विल बी ब्रागा. आई थिंक सो. एंड मोहन भाई आपकी प्रेडिक्शन? I think it will be very close between Braga and Napoli. I just think Napoli might just. But you guys are writing Union Berlin off. I have a feeling that they'll get good points of Napoli. I don't know कुछ why. भी हो सकता है, लेकिन फॉर मी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फॉर मी रियल मैड्रिड तो इजीली क्वालिफाइड है, लेकिन आई थिंक मुझे पता नहीं तीनों में, लेकिन मुझे ब्रागा का चांस ज्यादा लग रहा है. आई थिंक लेट्स वेट एंड सी व्हाट नापोली वर्सेस यूनियन बर्लिन में क्या होता है. आई थिंक अब तो बोलना मैं नहीं चाहता, बट आई थिंक रियल मैड्रिड वेरी क्लियर. एंड फॉर मी ब्रागा. अभी तक ब्रागा रहेगा. मैं कुछ कंफर्म नहीं किया, अभी तक ब्रागा रहेगा मेरे लिए. No, I think for Union Berlin, it's good for them to go to the Europa League. Because I think last time they were they reached the semi-finals or the round Yeah. semi-finals in the Europa League, I think. So I think they can go far in the Europa League and stuff like that. आई थिंक यार उन लोगों को पैसे चाहिए. 10,000 लोगों ने लोन लेके 20,000 लोगों ने ब्लड डोनेट करके कितना यार बहुत लोग तबाह हो जाएंगे अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इस टीम का सामने के 1-2 साल में. आई थिंक
For that यार मेरा मन तो चाह रहा है यार कि यूनियन बर्लिन कुछ कर ले यार, because Yeah. I actually think they life could on win that. the Europe. They could go far in If the I Europa go League. if I go into a little bit of history, क्योंकि फतेह भाई है and I think और 5 मिनट के लिए स्ट्रीम चलने वाला है, that Union Berlin, the place, I think that got destroyed. That was destroyed by USSR, and that place was destroyed by US and USSR after 1945. Yeah. And the campaigning of anti-fascism has destroyed that place, and people there has a very low range of GDP. सो आई थिंक भाई कोई ने अपने आंख डोनेट किया, मैं देख रहा था, कोई ने अपने उंगली किया, कोई ने ब्लड डोनेट किया, किसी ने लोन लिया, किसी किसी फैंस ने अपने बेटे और भाई अपने बेटी का शादी रोक के उसने कंट्रीब्यूट किया, उसने खुद अपना नौकरी छोड़ के स्टेडियम बिल्डअप किया. सो आई रियली वांट, एंड एक मैं बोल नहीं पाता क्योंकि आई कैंट प्रोनाउंस SUICID इन अ लाइव स्ट्रीम, बट I think a lot of people can commit that, because I want, मेरा दिल बोल रहा है यूनियन बर्लिन के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ उस दिन के जैसे PSG वाले में, मेरा दिल चाहता है कि भाई यूनियन बर्लिन जाए आगे, बट आई थिंक इट इज ब्रैगा. अब तो मुझे लग रहा है ब्रैगा यार, मुझे लग रहा है. मैं सिर्फ इस ग्रुप पे ये कहूंगा, देखिए मैं एग्री करता हूँ, बट आई थिंक नेपोली विल कम बैक. आई थिंक अटैक जो है यूनियन बर्लिन का जितना मैंने देखा, आई थिंक यूनियन बर्लिन अटैकिंगली कुछ नहीं कर पा रही, एंड आई थिंक नेपोली विल गेट गोल्स अगेंस्ट देम. नेपोली के डिफेंस का प्रॉब्लम है, बट इफ यूनियन बर्लिन कैन नॉट कैपिटलाइज ऑन दैट, उसका फिर कोई फायदा नहीं. इफ यू कैन नॉट कैपिटलाइज ऑन अदर्स, that's why I think Napoli will get through this group, and Real and Napoli. I'm still sticking up for Napoli कि शायद कोई surprise हो, but right now I'm going with Real 1, Napoli 2. But let's see what happens at Bernabeu. Again So, we are going after big names ना, again we are going after big names, again we are going after big I'm names. confident in this one. Like मुझे लगता है Napoli's attack will get them through in this one. सच में Like बताओ, Union जो Berlin, टीम का स्टैटिस्टिक्स है, अगर ये 2 साल बाद गेम हुआ इसी ग्रुप में, आई थिंक रियल मैड्रिड विल कम फोर्थ. एंड इट्स नॉट अबाउट हेट, बिकॉज आई एम वाचिंग ला लीगा. जो 17-18 साल के बच्चे हैं, वो जब 3 साल के थे, मैं तब से ला लीगा देख रहा हूँ. तो आई थिंक रियल मैड्रिड का जो परफॉर्मेंस है, दिस नापोली, दिस ब्रागा, दिस यूनियन बर्लिन विल परफॉर्म वेरी वेल. और मैं दिस दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी फॉर जिरोना एज अ टीम. आई एम हैप्पी फॉर जिरोना दैट दे आर राइजिंग देमसेल्व्स. लोग बोल रहे हैं शेख मंसूर यहाँ पे भी तेल का पैसा यार स्पेन पे भी फेंक रहा है. नो गाइस, आई वांट अ टीम टू राइज यार. सेविया, गेटाफे, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे. आई वांट अ टीम टू राइज. तो आई एम वेरी हैप्पी कि यूनियन बर्लिन अच्छा खेलेगा. एंड भाई जो टीम इतने सेकंड डिवीजन से आके बुंदेसलीगा में राइज कर रहा है, आई वांट यूनियन बर्लिन. 2 साल बाद यूनियन बर्लिन को तुम लोग देख लेना. लॉट्स ऑफ बिग प्लेयर्स, बिग नेम्स विल कम इनटू दैट क्लब. बट आई थिंक फॉर मी इट्स रियल मैड्रिड एंड ब्रागा. टिल नाउ ब्रागा, टिल नाउ. नापोली भी हो सकता है, बट टिल नाउ. Group D. तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, रियल सोसिएडाड, इंटर मिलान, साल्जबर्ग एंड बेंफिका. तो पहले I यहाँ think पे it's फतेह about भाई के पास Inter. जाऊंगा. You should start with Fateh Bhai. No, I फतेह think भाई आप बताइए. top two will be Inter and Sociedad. क्या order होता है? I think that game at San Siro on the last match day, उसी में I think determine होगा कि कौन first आता है, कौन second आता है. But I think these two teams, they are better than Salzburg and Benfica. Benfica sold too many players. So yeah, I think Sociedad and Inter will I go think for the pattern or the order, the ascending or descending, ये pattern पे difference होगा. Napoli, Sociedad second आ सकता है या फिर Inter Yeah. first आ सकता है. Yeah. लेकिन भाई मुझे लगता है clear. तो ग्रुप डी के बारे में ज्यादा मैं बात, इज दिस वेरी इजी ग्रुप, मैंने बोल के भी रखा था. इट्स अ वेरी इजी ग्रुप. इट्स अ वेरी इजी. And मोहन भाई? लोग बेंफिका का, हाँ I think it's a straightforward group. जो भी groups है, I think Straightforward it's group. out of the मैंने 2-3 बोल के groups. रखा था. फुली एग्रीड. मैं भी अनुराग भाई और मोहन भाई फतेह भाई से एग्री करता हूँ. मुझे लगता है इस बिटवीन इंटर सोसिएडाड एंड San Siro मैच में आई थिंक इंटर विल. Sociedad can be the dark horse in the Champions League. Like they may make the quarterfinals if they get a decent draw. Correct. Very good team. They are a very good team, but we are first. I think when you come first, it's more easier chance of easy draw. Yeah. Second, pay you have the threat of facing the big ones, the first teams. Yeah. So I think that's where you could get trouble for Sociedad. But I hope they do well, and मुझे लगता है it's going to be Inter and Sociedad for me. So up, we'll come to the group E1, and this is my favorite group. Feyenoord, Atletico Madrid, ये तो मैं बोल सकता Lazio, हूँ. Celtic. नहीं, पहले मैं एज अ सीनियरिटी फतेह भाई बोलो, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा टैक्टिकल एनालिसिस करना है, तो फतेह भाई बोल दो. Sure. I think Atletico Madrid will easily qualify and Lazio will not qualify from here. Lazio are so up and down. I wouldn't be surprised if Feyenoord would make it through because seeing them in the league, Mauricio Sarri, again, not a good defense. Midfield, nothing special. They lost their main player, Milenkovic-Savic, and they have not replaced him at all. So I don't see Lazio. They were very lucky that goalkeeper goal towards the end. Otherwise, I think Atletico Madrid had that match.
So your prediction is के कौन Atletico Madrid first, Feyenoord second. I think it would be interesting if Atletico Madrid finish second in this group, because then other teams who finish first will find it tough. Yeah, but no, I think the other three teams are not of Atletico's level. Yeah. What Straightforward. Atletico de Madrid is doing, they're playing with 5-3-2. चोलो ने इस बार 5-3-2 इंट्रोड्यूस किया, एंड सबसे अच्छी बात जो है इसमें कि मोराटा एंड ग्रीजमैन इज प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड. ये दो सेंटर फॉरवर्ड आगे है, एंड उनका मिडफील्ड में तो दे आर प्लेइंग इन अ वेरी डिफेंसिव वे. बहुत डिफेंसिव गेम खेल रहा है एथलेटिको दी मैड्रिड. अगर ये मत हो जाए कि एथलेटिको दी मैड्रिड इस बार बाजी मार दे यार, आई थिंक तुम लोग फिर भी बाजी मार दे. एथलेटिको दी मैड्रिड क्यों बोल रहे हो कि एथलेटिको दी मैड्रिड से बाजी मार दे? आई थिंक 2016 वाज द ईयर. इट वाज अ वेरी डिप्रेस्ड ईयर फॉर ग्रीजमैन एंड वेरी भाई मैं रोनाल्डो का लक बोल रहा हूँ. ही हैज टेकन ओनली, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता बिकॉज़ फतेह भाई इज हियर, मैं तो और कुछ बोलता. ही हैज टेकन हिज बैलन डोर, ही हैज टेकन हिज यूसीएल, सब कुछ ले लिया रोनाल्डो. यूरो सब ले रोनाल्डो ने ग्रीजमैन से ले लिया. दिस ग्रीजमैन का यार आखिरी चांस है भाई. आई थिंक ला लीगा में अगर मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाला हूँ, संजीव तो नहीं है क्योंकि संजीव मुझे गाली दे देगा. I don't know why I'm feeling very much confident more and more on Atletico de Madrid than Real and Barca. I think I'm a honest football fan first, then भाई इतना डिफेंसिव खेल रहा है, एंड मोराटा एंड ग्रीजमैन भाई they are playing at the center back and saw Llorente and Coke in the midfield. They are doing magic. और पीछे तुम कैसे गोल मारोगे? तुम मिडफील्ड को छोड़ के अगर पीछे जाओ, मैं अगर देखूं यहाँ पे सैवेज, जिमेनेज, हर्मोस और लिनो, और हम लोगों का वर्ल्ड कप विनर मोलिना क्या खेल रहा है भाई एज अ राइट बैक. क्या खेल रहा है भाई, क्या खेल रहा है मोलिना इन दैट राइट बैक पोजीशन विद द एक्सपीरियंस उस ऑफेंसिव एंड डिफेंसिवली. आई थिंक एथलेटिको द मैड्रिड इज वेरी क्लियर. एंड सेल्टिक के बारे में बोल रहे हो तो विद हार्ट्स ऑफ विलियम वॉलेस एंड फ्रॉम ब्रेवार्ट, I think Fateh Bhai knows what I'm saying, but I think it's this time. I think Atletico de Madrid will come first, and up. So then I think Feyenoord. I think, but Atletico de Madrid will finish in the top because of their formation. I think if I do not want City to draw any team, that will be Atletico de Madrid. It is so Of course. मैंने क्या बोला? Don't get surprised. मुझे confidence आ रहा है Atletico de Madrid पे ज्यादा इस साल. मैं बोल रहा हूँ the top two teams from La Liga is not Madrid and Barcelona. It's Barcelona and Atletico de Madrid. मैं पहले ही बोल चुका था. मैंने मैच से पहले किसी को बोला था कि मैं कभी कुछ खुद बेट फेट नहीं लगाता. मैंने बोला था गिव द बेट और मोराटा, तुम दे दो पैसा, तुम अगर देना चाहते हो. आज रियल मैड्रिड हारेगा पर बहुत बुरी तरीके से हारेगा. वही हुआ. मोराटा ने 2 गोल मार दिया, ग्रीजमैन ने. आई थिंक भाई ये जो काम उन लोगों का चल रहा है, इतना डिफेंसिव गेम प्ले, और ये मिडफील्ड कोक से, Coke is giving passes, Gimenez to Coke is giving passes to Griezmann is giving passes to Morata. I think bhai cholo, I think it's time yaar. I think it's Atletico de Madrid this time. I think quarterfinal, semi-final, even I can see them in finals. First of all, मैं कहना चाहूँगा big up Fateh bhai, thank you so much भाई to join. I know आपको जाना है, like आपने बोला half time पे आओगे. Yeah. I enjoyed this stream so much, listening to Anurag and Mohan and you. बहुत मजा आया. So I was like, चलो छोड़ो इंटर मिलान का मैच नहीं देखते. Let's focus on Napoli match because it was beautiful. But भाई फतेह भैया जाने से पहले जल्दी बोल के फिर जाओ about group F, क्योंकि group F ही main group है. Just बोलो PSG वाला वो बोल के. Yeah, I think PSG and Newcastle will do it. I have a feeling, but either PSG or Newcastle or PSG or Milan. I don't trust Dortmund. I think that defense and after what they did last year, like Napoli, if you sell Bellingham, उन लोगों का problem क्या? They have to sell. It's about एक था north of the Braveheart movie. You have to sell your players to Bayern Munich. You can't do anything. Exactly. So I think, but I would like Milan to stay in Europe, so that they don't run away with the league like they did 2 years ago. So I'm hoping it's PSG and Milan. Absolutely, thank you so much Fateh bhai. बस absolute pleasure भाई. Anurag, pleasure. Mohan, pleasure. Shrey, मजा आ गया. मेरा साथ तो हमेशा होता रहता है. And you guys will see him in Sport Freak also for a review. Match day 4. Done. Bye guys. Bye. Good night. Thank you so much Fateh bhai. Absolute pleasure. Thank you so much Fateh bhai. तो guys हम जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि coming on to the next 1 मिनट यार, ये मैं सेट कर दूं 1 मिनट. तुमने बंद क्यों करवा दिया? ये क्या हो गया यार? Just give me a second. तुझे एक बात बता, मुझे कुछ डर लग रहा है. तू ना कभी
कुछ बहुत सच चीजें बोल के जाता है जो तुझे नहीं बोलना चाहिए। तूने जो बोला ना आज, मैंने तुझे उस दिन फोन करा था इस चीज बोलने के लिए। मुझे क्यों लग Yeah, रहा है दिस टाइम इट विल definitely. बी एथलेटिको द मैड्रिड वर्सेस सिटी। Uh, अबाउट माय I mean, there एक्सपीरियंसेस अबाउट is. चैंपियंस लीग, आई हैव देख, मैं ला लीगा देखता हूँ, मैं बुंदेसलीगा देखता हूँ, मैं सीरिया भी देखता हूँ भाई। देखो लेकिन तुम देखो लोग बोलोगे देखो ईपीएल, मेरे ईपीएल अनुराग का भाई, मैंने डर्बी देखा, मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड का, सो देयर आर टू थिंग्स दैट रियली स्ट्रक मी, द वे मोराटा इज मेकिंग दोस लेट रन्स इनटू द बॉक्स, और दूसरा चीज, एंड ग्रीजमैन का क्या है ना, व्हाई डिड इट नॉट वर्क आउट फॉर हिम एट बार्सिलोना, उसको वो फ्री रोल नहीं था, अब सिमियोने ने उसको फ्री रोल दे दिया, सो इट्स लाइक फ्लोटिंग अराउंड द पिच ऑक्यूपाइंग दोस हाफ That's स्पेसेस, that's that's a दैट्स foolishness. That's the foolishness of Koeman. Being a legend of Barcelona, Cholo is a very good manager. अर्जेंटाइन का मैं तो बोलूं चोलू मैराडोना से भी अच्छा मैनेजर है, स्कलोनो से भी अच्छा मैनेजर है भाई चोलो। द मैटर इज दिस कि गिमेनेज एंड सैविज, जब भी उन लोगों के पास बॉल आ रहा है, दे आर गिविंग द पास टू गोके, एंड लॉरेंटे क्या कर रहा है, तब ऊपर जा रहा है टू प्ले द रोल ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर फ्रॉम द राइट हैंड साइड मिडफील्डर, एंड क्या हो रहा है, दे आर गिविंग पासेस टू ग्रीजमैन। अब मोराटा का क्या है, मोराटा तो ऑफसाइड मैन है, मोराटा इज अ मैन ऑफ ऑफसाइड। उसने, हम भूल गए चेल्सी के लिए उसने क्या परफॉर्मेंस दिया था, हम भूल गए। आई थिंक सबसे अच्छा भूलते चेल्सी फैंस, चेल्सी के बारे में जो परफॉर्मेंस है सबसे ज्यादा भूल जाते हैं चेल्सी फैंस। मोराटा का क्या है, जब फॉर्म चलेगा एक सीजन के लिए चलेगा, जब नहीं चलेगा वो भाई बहुत open गंदा। goals. This Open is the goals. time that Morata has become a mature player and a much more better player according to me. And guys, trust me, Morata यार रिटायरमेंट से पहले एक बैलेंडियोर वाला अगर नॉमिनेशन उसके पास आ जाए तो भाई इस सीजन के लिए आएगा। तुम लोग मुझे यार रैंट ट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैं जो बोलता हूँ भाई, मोराटा को मैंने देखा, he is getting passes for Griezmann, he is getting passes for Gimenez, he is getting passes from Llorente, and भाई उसने जो खेला अगेंस्ट रियल मैड्रिड, I think भाई I think भाई काबिल And तारीफ। another thing, the way Koke is connecting with Griezmann is also very good. Of course, मैंने तो वही बोला Standing in था, their link up मैंने तो play, वही it's बोला। like And super. what happens is this कि वो लोग 5 in the back खेल रहे हैं, and क्या हो रहा है कि sometimes Saul जाके पीछे डिफेंडर बन रहा है, so 6 man in the back with just 2 midfield, and ये लोग ऐसे ही कचरा कर रहे हैं, तो उन लोगों ने गोल ही नहीं मार पाया, उन लोगों ने गोल मारा। And that too, Oblak as your goalkeeper. Oblak is one of the finest goalkeepers. मैं अगर 2 साल Yeah, पहले that's जाऊं, what. Oblak That's was what. the greatest goalkeeper. Yeah, Oblak one was of the the best. finest goalkeeper. One of the And best. मैं So, कंट्रोवर्शियल कमेंट भी कर सकता हूँ यार, टर्ट सेकंड का जो परफॉर्मेंस था, no, Oblak is one of the best. better than Ter Oblak is Stegen. one of the best. तो उतना strong है उनका He defense. destroyed himself actually. He they're and like Donnarumma very good. destroyed himself in some way or the other. हाँ, going Shrey to bhai, group you're match. muted. Shrey bhai, you're muted. Shrey bhai, ओह you're सॉरी, muted. मेरे को लगता है ग्रुप बहुत अच्छा होने वाला है। आई थिंक एटलेटिको विल गो थ्रू, बट मुझे लगता है कि देयर इज गोना बी अ बिट ऑफ सरप्राइज, लेकिन वन मैच फेयरनर लाजियो विल गिव एटलेटिको मैड्रिड अ वेरी वेरी गुड मैच। तो आई थिंक फेयरनर लाजियो में आई थिंक इज गोना बी गुड फुटबॉल, और मुझे लगता है एक ना एक टीम जाएगी, और जो टीम यूरोपा लीग जाएगी वो भी लाइक वोंट बी इजी अपोनेंट फॉर एनीवन। तो ग्रुप एफ में मैंने पहले ही कह चुका हूं, तो आई डोंट वांट टू रिपीट। मेरे लिए पीएसजी न्यूकासल इजीली द वर्स्ट ग्रुप, मेरे ख्याल से द मोस्ट ओवर हाइप ग्रुप। बट मैं आना चाहता हूं अनुराग भाई, मोहन भाई पे एनी चेंजेस इन प्रेडिक्शन गाइस? No, मैं I तो think प्रेडिक्शन PSG देता हूँ will सोच go समझ through, के। and PSG will go Newcastle through. or Milan, or Newcastle or Milan. I think AC Milan लेकिन will go एक चीज मोहन, तू क्या बोल रहे, कौन कौन, मैं टॉप 2 टीम्स बोलता से भाई, आर यू मतलब यू आर फीलिंग वेरी वेल ना? एक्चुअली मुझे बुखार आया है, बस हाँ नहीं, मेरे भी, नींद तो नहीं आ रहा मेरे है भी ना। अभी लाइक नॉट फीलिंग टू वेल। ओके जल्दी बोल देता हूँ यार, तुम थोड़ा सा स्क्रॉल करके उसको ऊपर में ले जाओ। मैं सिर्फ बोलूं, हाँ मोहन तेरे लिए क्या सोच रहा है कि पीएसजी और न्यूकासल, मतलब ये कौन टॉप करेगा ग्रुप? मैं PSG और AC Milan. PSG will top the group और AC Milan qualify करेगा. Newcastle will be third, I think. पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दिस ग्रुप इज रियली Dortmund. समथिंग एल्स, दिस ग्रुप इज रियली ऐसी समथिंग एल्स। नहीं, आई ट्रस्ट Actually, अनुराग भाई अ लॉट। नहीं I नहीं think नहीं नहीं, I you're trust right. Anurag bhai, you're right. See, PSG will be top, but second position is interesting because if Dortmund continue to play well, but PSG will qualify for This is sure, I UCL. think. This is मेरे को लगता है UCL. वी नीड टू पुट मोर No, but स्टॉक्स इन PSG मिलान। will आई थिंक qualify. डॉर्टमंड डिसअपॉइंट करने वाली है। I mean, second place, I don't know. I think AC Milan, but PSG will finish first, I think. That is for sure, I think. आई थिंक नेक्स्ट मैच But बहुत see, इंपॉर्टेंट है। अगर but सेंट जेम्स इफ दे विन एट सेंट जेम्स पार्क, फिर तो दे आर फिनिश फर्स्ट। अगर वहां जीत गए तो देन तो आई थिंक दे गारंटेड फर्स्ट। अगर सेंट जेम्स पार्क में और जाके आपने जीत गए, प्रेडिक्ट किया था कि पीएसजी जीतेगा भी सेमी पार्क में, आपने प्रेडिक्ट नहीं नहीं नहीं, किया मैंने था? 1-1 कहा था सेंट जेम्स पार्क का, 1-1
मेरे को लगता है ड्रॉ होगा आज एंड मिलान विल बीट डॉर्टमुंड. पता नहीं, but And again अगला this जो is होता है, UCL, anything can happen. This is UCL. मैं अभी भी बोलूंगा यही एकमात्र ग्रुप है, शुद्ध हिंदी में बोलूंगा, दो आई डोंट नो हिंदी, बट यही एकमात्र ग्रुप है जिसमें मैं टॉपर भी नहीं बोलूंगा, मैं सेकंड भी नहीं बोलूंगा, मैं थर्ड भी नहीं बोलूंगा. दिस इज द लास्ट ग्रुप. मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा ग्रुप के बारे में. जो तुम, मैं सिर्फ यही बोलूंगा, जो तुम देखोगे, तुम्हें रात को नींद नहीं आएगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. ये पूरा पलट जाएगा, पाशा पलट जाएगा. बस. and I think इसका अगला ग्रुप सिटी वाला ग्रुप है, आरबी लेप्सिग, मैनचेस्टर सिटी, रेड स्टार बेलग्रेड एंड यंग बॉयज. वो तो तुम्हें बुखार है, मुझे भी बुखार है. आई थिंक ये तो आई शुड गो टू द किंग एंड आस्क हिम अबाउट हिज क्वीन. किंग सर, Man City or ये Leipzig, ग्रुप के बारे में both बोलने का कोई straightforward. जरूरत ही नहीं है. हाँ, I think बहुत straightforward है. but I think by the Rodri का absence is, I think Pep should think about it कि Rodri का absence is making, and गुंडोगन भी नहीं है ना उनकी टीम में, तो I think No, ये but थोड़ा no, सा- but the thing is, Rodri भी absent है, John Stones भी absent है, Bernardo Silva भी absent है. If Stones is there, Stones can play as a DM. If Bernardo Silva is there, he can do something there. So that's the problem. But Bernardo Silva is a very good center midfielder also. yeah, he's one of the best center midfielders. Right winger, center midfielder यार, मैं can तो play- बोलूँ all in all. He has a 50 million pound release clause. He'll be going off next year for sure. अच्छा यार जल्दी बोलो, उसे टॉप कौन रहेगा टॉप? आई थिंक City, सिटी एंड आई थिंक सेकंड लेप्सिग. Leipzig. एंड लास्ट वन है बार्सिलोना, एंट्werp, शाख्ता, पोर्टो. मेरे लिए तो स्ट्रेट कोई आंसर ही नहीं, सबसे इजी ग्रुप है मेरे लिए, बारसा एंड देन पोर्टो. Barca Porto. Yeah, Barca Porto. इसके बारे में बोल के मैं खुद को इंसल्ट नहीं करना चाहता. इट विल बी Barca Porto. एंटवर्प का तो कोई चांस ही नहीं है. बस मैं बोलना ही नहीं चाहता. शख्तार नहीं, पोर्टो एंड बर्सा. बर्सा इन द टॉप, पोर्टो इन सेकंड. पता नहीं कल अगर कुछ हो जाए, जैसे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, कल अगर कुछ हो जाए तो पता नहीं यार कैसे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं. सो आई डोंट, यू डोंट नो, बट आई थिंक यार बोलना तो नहीं चाहिए. आई थिंक यार बार्सिलोना टॉप करे, बार्सिलोना क्वालिफाई हो जाए. आई प्रे टू गॉड. But Because Anurag Bhai, Premier really League, wishes but Barca Premier साथ है. League, but Premier League clubs का बहुत पूरी तरह से फट गया. बट आई थिंक वो भी देखो, And this man wanted Premier League clubs to shine and flourish. लेकिन यार मैं बोल रहा हूँ क्वालिफाई होगा Arsenal. This is a conspiracy because see, ये मैं conspiracy theory पढ़ रहा था इन कोरा. Somebody has written कि श्रेय भाई का बुखार है, तो जल्दी बोल के खत्म करता हूँ. नहीं ठीक है मैं एक्साइटेड हूं सुनने के. People, they are investing in Saudi league. Lot of guys are investing in the Saudi league, like the Chinese league or something league. अब ये कॉन्स्पिरेसी है. ये बोला जा रहा है कि प्रीमियर लीग क्लब्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा. प्रीमियर लीग का टीआरपी अगर कम हो जाए तो मुझे दोष मत देना. मतलब दे आर इन्वेस्टिंग इन सऊदी लीग ना. इतना पैसा अचानक से जिरूना अच्छा खेलने लगा ला लीगा पे, शेख मंसूर के पैसों से. अचानक से लीग 1 के मैचेस पे टीआरपी, किंग्स का अचानक से ईपीएल का थोड़ा सा डाउन हो रहा है टीआरपी. एंड आल्सो ड्यू टू बिकॉज़ चेल्सी बिग टीम्स पैथेटिक परफॉर्मेंस लाइक यूनाइटेड, चेल्सी. सो लेकिन यार आई थिंक इंग्लिश क्लब्स अब सिर्फ सिटी, आर्सेनल, यार ये छोड़ के तो मैं कुछ नहीं देख पा रहा यार. इसलिए वीआर पे कॉन्स्पिरेसी ला रहे. नहीं पर मैं सोचता हूँ आई थिंक आर्सेनल का एक सरप्राइज लॉस ही है. आई थिंक दे विल रिस्पोंड. यूनाइटेड तो केओस है, वो तो लाइक वो तो नहीं कह सकते. यूनाइटेड खत्म, पैसा हजम. यूनाइटेड खत्म. एंड आई वांट यूनाइटेड टू कम इन थर्ड पोजीशन लाइक मोहन. आ जाओ United साढ़े. But with United, until the takeover of Saudi happens, nothing is gonna. नहीं होगा नहीं. Glazers are like मैं कई मामलों में I feel for United fans, Glazers are destroying the club यार. मतलब नहीं, उनका स्टेडियम का, can you imagine the roof of Old Trafford leaking? पूरी रूफ लीक कर रही है. That is पूरी like, roof. yeah. उनके पास ट्रेनिंग ग्राउंड की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है. यूनाइटेड जैसे क्लब ने I वुमेन mean, टीम we की might देर hate बाद the खोली. club and stuff, but we feel bad for fans, right? हमारी तरह they are like उन्होंने जो seeing the game and वुमेन टीम कितने टाइम बाद खोली फॉर अ क्लब ऑफ यूनाइटेड स्टैचर. what a club. वुमेन Yeah, टीम exactly. इतने टाइम बाद खोलना, दैट इज नॉट गुड. Not good at all. Like Barca, Chelsea, City, हमारी वुमेन टीम they are playing for a long time. United is bigger than Chelsea, bigger than City, और उनकी वुमेन टीम हमसे like बहुत लेट आई है. Our women team is far above their women team right now. हमारी दोनों टीम्स. Yes. और जो फैसिलिटीज हमारे प्लेयर्स को मिलती है, ट्रेनिंग ग्राउंड मिल रही है. guys before packing up, क्या लग रहा है यार नेक्स्ट राउंड? एक प्रेडिक्शन दे दो. मुझे पता है प्रेडिक्शन कुछ नहीं चलेगा ये सब, लेकिन एक बोल दो मुझे. तो मैं तो बोल रहा हूँ सिटी वर्सेस एथलेटिको दी मैड्रिड होगा.
Oh. No, we don't. But City Atletico both, City but okay. both will not finish the first. very next round, not the very next round. कभी तो होगा, इस UCL में होगा. अच्छा कभी तो होगा. ओके. मैं मेरे को नेक्स्ट पता राउंड के क्या बारे में कैसे बोलूं? लॉटरी से होगा. हाँ. I think कभी तो होगा. It will be मोहन interesting. कभी-कभी सच बातें Atletico बोलता है Real Madrid. because his subconscious mind, because he was watching football for so many years, he's not a plastic fan of City. उसका subconscious mind में ये हुआ and मोहन ने सही बोला क्योंकि मैं ये मोहन को कॉल करके बोलने वाला था. It will be Atletico de Madrid versus City. मेरे को फीलिंग आ रही है पता नहीं अगले राउंड में बायर्न न्यूकैसल की. बायर्न वर्सेस न्यूकैसल की. Newcastle qualify नहीं होगा. I think it will be too आई much थिंक for अगर the मेरे को लगता है injuries. अगर होगा तो सेकंड होके आएगा. अगर होगा तो प्रॉब्लम सेकंड क्या है आएगा. ना श्रेय, उनका अभी स्वैन बोटमैन इंजर्ड है, उनका मेन डिफेंडर. नहीं उनका मैं कैलम मानता हूं पता विल्सन का है. इंजरी चल रहा नहीं है. नहीं उनका मोहन हार्वी भाई पता क्या बार्न्स है इंजर्ड यहाँ है. से पूरा एग्री करता हूँ. पर बात पता क्या है जो उन्होंने मिलान में ड्रॉ ले लिया ना एसी मिलान के अवे जाके. हाँ. अगर वो अपने घर पे हरा दे जहां पे फैन का सपोर्ट है वो एक एसी मिलान शुड have beaten them like it should have been AC Milan 2 Newcastle 0 but Milan missed a chance big chance मोहन भाई. मिलान मिस्टर एंड आई चांस भाई. थिंक अब एंड कर देते हैं. इट्स टू लेट नाउ. एंड अनुराग भाई भी पहले मैं जाऊंगा स्पोर्ट्स 3 पे जाके सब्सक्राइब कीजिए. अनुराग भाई 100 डिग्री के फीवर पे यहाँ पे आ रहे हैं और स्ट्रीम कर रहे हैं. तो बिग अप टू अनुराग भाई. मैं भी कल 3 घंटे सोया बट फाइनली 3 घंटे सोने का फायदा हुआ. चेल्सी अपना मैच जीती तो दैट्स अ बेनिफिट. बट I think Chelsea is coming back, you know, guys. Chelsea is coming back, and the same YouTuber, who doesn't have any knowledge about EPL. अरे भाई मैं EPL बहुत पहले देखता था. कि 4 साल से नहीं देखता इसके मतलब नहीं है. मैं मैन सिटी और अर्सेनल का मैचेस देखता हूँ. The problem is that के यार एक यूट्यूबर ने बोला था सैक पोचेटिनो. कल वो बोल रहे पोचेटिनो भगवान है. By the way, guys, that's all for today, and go and subscribe to City Unplugged. Go and subscribe my channel if you want. And I think Shrey Bhai is not feeling well, so I am just doing his work. So guys, कैसा लगा? थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी में आप लोगों का स्ट्रीम. सब्सक्राइब किए तीनों चैनल को. गुड नाइट, टेक केयर. थैंक यू एवरीवन. बिग अप एवरी डे एंड होपफुली आपका दिन बहुत अच्छा जाए. थैंक यू एवरीवन. विशिंग यू द बेस्ट. थैंक यू.